We got the two captains in the match referee, Mr. Amir Ganai, the match referee for today's game, and we got the captain of Designing Dream is Danish Khande, and we got something special and someone special from this part of the world. It's Adil Katsur here on your screen. It's time for the coin to go up in the air. Adil will spin. Tail is the call. It's tail. It's come out as tail. So Designing Welcome to the match number 2 for today. We got the man who matters the most alongside me. To the left of me, we got the match referee for today's match. It's Amir Ganai. Then moving on, we had the captain of Panchal group. Then we had the captain of Falah coach and Mr. Imran. And we got the chief curator over here, Mr. Arshad. It's time for the coin to go up in the air. Who's going to spin the coin? Imran will spin the coin. Tail is the call. It's tail. It's come out as tail. कप्तान टॉस आपने जीता, क्या करना चाहेंगे पहले और क्यों करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली सर हमारे पास बैटिंग बढ़िया है, 9 10 11 तक बैटिंग है, तो हम इसलिए पहले बॉलिंग ही करेंगे। सेम टीम खिला रहे हैं, कोई चेंज आज के मैच में? नहीं 2 चेंजेस आज भी है टीम में। चलिए, गो वेल इन द गेम। ओके, थैंक यू। इमरान हमारे साथ है। इमरान, टॉस आप जानते हैं कि आपके पाले में नहीं गया है, अगर आप टॉस जीते तो क्या होता आपका फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू बी ऑनेस्ट हम पहले बैटिंग ही करती। इट लुक्स लाइक ए गुड विकेट टू बैट ऑन। इंशाल्लाह अच्छा स्कोर सेट करेंगे, इंशाल्लाह डिफेंड भी करेंगे। चलिए, किस तरह की कॉम्बिनेशन आज के मैच में खिला? 2-3 चेंजेस है आज। एक सुपनर बुक लेफ्ट आर्म सुपनर वो भी खिलाया हमने, इसीलिए क्योंकि आज हमारे हिसाब से विकेट अच्छा है, तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे आज। जस्ट गो वेल इन द गेम. So the news from the center is Panchal will set the target for Falah Chan. We will be back shortly with a game, and let's hope for the best today. We're going to see something special and competitive cricket from this very venue. Till then, join us in the next while from now with live action. Welcome to the match number 2 for today. We got the man who matters the most alongside me. To the left of me, we got the match referee for today's match. It's Amir Ganai. Then moving on, we had the captain of Panchal group. Then we had the captain of Falah coach and Mr. Imran. And we got the chief curator over here, Mr. Arshad. It's time for the coin to go up in the air. Who's going to spin the coin? Imran will spin the coin. Tail is the call. It's tail. It's come out as tail.
कप्तान टॉस आपने जीता, क्या करना चाहेंगे पहले और क्यों करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली सर हमारे पास बैटिंग बढ़िया है, 9 10 11 तक बैटिंग है, तो हम इसलिए पहले बॉलिंग ही करेंगे। सेम टीम खिला रहे हैं, कोई चेंज आज के मैच में? नहीं, 2 चेंजेस आज भी है टीम में। चलिए, गो वेल इन द गेम। ओके, थैंक यू। इमरान हमारे साथ है। इमरान, टॉस आप जानते हैं कि आपके पाले में नहीं गया है, अगर आप टॉस जीते तो क्या होता आपका फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू बी ऑनेस्ट हम पहले बैटिंग ही करती। इट लुक्स लाइक ए गुड विकेट टू बैट ऑन। इंशाल्लाह अच्छा स्कोर सेट करेंगे, इंशाल्लाह डिफेंड भी करेंगे। चलिए, किस तरह की कॉम्बिनेशन आज के मैच में खिला? 2-3 चेंजेस है आज। एक सुपनर बुक, लेफ्ट आर्म सुपनर वो भी खिलाया हमने, इसीलिए क्योंकि आज हमारे हिसाब से विकेट अच्छा है, तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे आज। Just go well in the game. So the news from the center is Panchal will set the target for Al-Falakh. We will be back shortly with a game, and let's hope for the best today. We're going to see something special and competitive cricket from this very venue. Till then, join us in the next while from now with live action. Welcome to the match number 2 for today. We got the man who matters the most alongside me. To the left of me, we got the match referee for today's match. It's Amir Ganai. Then moving on, we have the captain of Panchal group. Then we had the captain of Al-Falakh, Mr. Imran. And we got the chief curator over here, Mr. Arshad. It's time for the coin to go up in the air. Who's going to spin the coin? Imran will spin the coin. Tail is the call. It's tail. It's come out as tail. कप्तान, टॉस आपने जीता, क्या करना चाहेंगे पहले और क्यों करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली सर हमारे पास बैटिंग बढ़िया है, 9 10 11 तक बैटिंग है, तो हम इसलिए पहले बॉलिंग ही करेंगे। सेम टीम खिला रहे हैं, कोई चेंज आज के मैच में? नहीं, 2 चेंजेस आज भी है टीम में। चलिए, गो वेल इन द गेम। ओके, थैंक यू। इमरान हमारे साथ है। इमरान, टॉस आप जानते हैं कि आपके पाले में नहीं गया है, अगर आप टॉस जीते तो क्या होता आपका फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू बी ऑनेस्ट हम पहले बैटिंग ही करती। इट लुक्स लाइक ए गुड विकेट टू बैट ऑन। इंशाल्लाह अच्छा स्कोर सेट करेंगे, इंशाल्लाह डिफेंड भी करेंगे। चलिए, किस तरह की कॉम्बिनेशन आज के मैच में खिला? 2-3 चेंजेस है आज। एक सुपनर बुक, लेफ्ट आर्म सुपनर वो भी खिलाया हमने, इसीलिए क्योंकि आज हमारे हिसाब से विकेट अच्छा है, तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे आज। Just go well in the game. So the news from the center is Panchal will set the target for Al-Falakh. We will be back shortly with a game, and let's hope for the best today. We're going to see something special and competitive cricket from this very venue. Till then, join us in the next while from now with live action. Assalamu alaikum. Good afternoon. I welcome you alongside my colleague Latif Saab, and we got Nadeem Bhai here in the com box. And this afternoon, it looks like gloomy afternoon. All of a sudden, cloud is back on the sky, disperse it.
No more bleed blue skies here at the center of Locktipora. Earlier on, it was bleed blue skies. Now it's dispersed clouds on the sky. Al Falah Chan taking on Panchal group, Panchal Warriors. We're backing this event, this tournament. And it is going to be a massive event. And believe me, it's an extravaganza of cricket unfolding here at Locktipora. Back to the business. Time for the action in the middle. It's going to be Panchal Warriors bowling first against the likes of Al Falah Chan. Let's see what Chan has in his team. What they're going to do with the bat, let's find it out. As we look at the two openers out in the middle. आके थोड़ा बैठ In the जाना com फिर box, I got Latif Saab today. देख लेना पहले मुझे छाता लगाने दो फिर आप खेलो For the past couple of days, Brandishit feasting guys finally makes it to the com box. And we got Nadeem here. Latif Saab, your words, your comments straight away. अस्सलामुअलैकुम, स्वागत सभी व्यूअर्स का करता हूँ मैं स्टेट स्पोर्ट्स लाइव और किस के ऑफिशियल फेसबुक पेज के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए। टॉस जीत के पंचाल वेरियर्स ने उनकी टीम के कप्तान दानिश रफीक ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और उनकी यहां से आमंत्रण किया गया, न्योता दिया गया विपक्ष टीम को, यानी अल फलाह कोल्ड चेन को कि वो बल्लेबाजी पहले करें पंचाल वेरियर्स के टीम के सामने। अल फलाह कोल्ड चेन देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी करते उनकी प्रारंभिक जोड़ी आदिल पोलार्ड के साथ करने के लिए। रॉब स्टंप से बाहर, रूम मिला, जगह मिली खूबसूरती के साथ, गेंद को टिप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। हल्की सी शॉट मिली अभी तभी की गेंद और खूबसूरती के साथ लाजवाब टाइमिंग शॉट बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में से गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका, इस चौके के साथ टीम के रन से किया 4। अल फलाह कोल्ड चेन टॉस जीत टॉस हार के पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही आबिद नबी की पहली गेंद पे बेहतरीन स्ट्रोक, बैकफुट पे जाके लाजवाब टाइमिंग के साथ वो स्ट्रोक निकाला। इस बार अगली गेंद पुल करना चाहते थे, मुकम्मल तौर पे आदिल पोलार्ड बीट हुए, हालांकि गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ आई, बल्लेबाज के अनुमान से ज्यादा ऊपर उठी और बीट हुए और 1 शॉट का भी इशारा तो अंपायर की तरफ से और वाइड का भी पहली 12 रन खाते हुए जुड़ती हुई अल फलाह कोल्ड चेन के 5 बगैर किसी नुकसान के। मुनव्वर, It's 5 for none in the very first. We bang it in short. Abid was surprised for a while. He has played for India under 19 international. He was part of that team which toured England back in 2007, around that. That one gone fine down to the fine leg, almost long leg area. And the two batters crossed over for a single 6 for none. And Abid Nabi, he was part of MRF Academy. You won't find anyone there. It isn't everyone's cup of tea to train himself under the likes of Gillen Magra. Magra is going to be the lone Magra in the world. Nobody can fit in his boots. That was only boy, that was only person, that is Gillen Magra. Legendary Magra. And he was there. Short to sub-catch it. It's gone in the gap. Now he's just trying to explain what happened there. Not chasing the ball. And ball races away for 4. And with that boundary, there is addition to the tally into the double figures that were brought to you by KIS Unstoppable. And this broadcast is coming your way live and exclusively from Locktipora Sports Field. You're watching Kiss and State Sports Live. We have finally our chief scorer back, Said Shoaib. Nadeem taking care of a score for a while. Now it's back to the official score of the tournament, that is Shoaib. As we watch with the slip in place, the next one, that is a cracker of a blow. He invites that gift. Oh, he accepts that gift. He says, oh, he obliged and says, thank you very much. He accepted that gift gleefully and sends it packing. He invited him. He lures him into that shot and look at that one. That is a lovely. And cover that one. Over covers and gone into the extra cover boundary for 6. Beautiful shot. Beautiful hands from Danish there. And now I speak up short. Invited him. He says, thank you very much. I don't need second invitation. Has that gone down? Yes, it has. It gone between the wicketkeeper and the slip hitter down to the third man for 4. He yells. He shouts. But oohs and ahs doesn't matter. What matters the most? You got to keep that one in your gloves or the hands. But unable to keep that one, it goes through.
And that four will definitely hurt Abid Nabi. Look at that one. Edgish one. Thick edge. Genuine edge. Fine decent edge. But to no avail. That's for 20 of 5 balls. Expensive start as a bowler. As a batter, you are running away with the scorecard. You're enjoying your batsmanship straight away. The last one. Oh, that is a quality shot, but unable to find the gap. One done. 20 for none. काफी बराबर शुरुआती आता हुआ अल फला कोल्ड चेन के लिए 20 बगैर किसी नुकसान के बेहतरीन स्ट्रोक्स दानिश बीडी 14 पे 3 गेंदों का सामना करने के बाद वो जो स्ट्रोक लिया है। अगर हम बात करेंगे दानिश बीडी ने आबिद नबी के विरुद्ध ऑफ स्टंप से बाहर वो जो स्ट्रोक खेला था वो दर्शनीय था। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो छक्का आया था, बेहतरीन छक्का। और इशफाक ब्रसनिन दूर वाले छोर से आप जाके गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। पंचाल वॉरियर्स फिलहाल टॉस हार के टॉस जीत के दूसरी पारी में वो पहली पारी में फील्डिंग कर रही है और आमंत्रण किया गया यहाँ पे टीम अल फला कोल्ड चेन को कि वो बल्लेबाजी करे। अभी तक 20 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर पारी का मुकम्मल हो चुका है। अभी नबी का पहला ओवर काफी खर्चीला गया और खर्चीली गेंदबाजी उनके द्वारा। शायद अब यहाँ से हमारे कॉम्बॉक्स एंड से उमर वॉटसन के गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मोहम्मद उमर हमारे कॉम्बॉक्स एंड से गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। अल फला कोल्ड चेन 20 बगैर किसी नुकसान के एक ओवर की समाप्ति के बाद। Special guest here, and not just a guest, he is the part and parcel when it comes to the Bijbehara Cricket Station. Shafi Saab is here, and we're coming up with a massive league in Sir Ramadan. I still remember last season, and my words were humble and bumble. It was Badshah Sports Numble taking on Bijbehara Sports Club. Words were just like this: it's going rumble and bumble. And it was Parvez Rasool delivering the thumping punch at that very turf. That is such a wonderful playfield, covered out of that ghat. It is just like a mountain, a small one, but that playfield, that is absolutely amazing, breathtaking. I still remember that shots, all white copybook, all wire, from cricketing book, that shots that were resembling with international cricketers. I still remember that shots of Parvez Rasool just camping back, then pulling the ball, going over covers. That was masterpiece and masterclass of the batter Parvez Rasool that season. And once again, Seed is going to witness another great event, cracker up a tournament in coming days. इस बार गेंद को खेला है सीधे बल्ले से कॉपी बॉक्स स्टाइल में। लाजवाब टाइमिंग, बॉलर इज बैक ड्राइव, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, कॉपी बॉक्स स्टाइल, और क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो एक एक्सीलेंट ब्रिलियंट स्ट्रोक था। शानदार, कमाल का, गजब का शॉट। चौबीस बगैर किसी नुकसान के अगली गेंद उमर वाटसन की दिशा से बढ़ के लेग स्टंप से बाहर। बल्ला जरूर चलाना चाहता वहां पे आदिल पोलार्ड ने, लेकिन मुकम्मल तौर पे बीट हुए। रोहमू से ताल्लुक रखते हैं। दानिश बीडी की बात करें तो बंडसुआ पुलवामा से ताल्लुक रखते हैं। दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, लोकल है लेकिन बेहतरीन टैलेंट है दोनों के पास। आदिल पोलार्ड और उसके साथ साथ दानिश ए बीडी नॉन स्ट्राइक एंड पे और आदिल पोलार्ड स्ट्राइकिंग पे एंड पे फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। उमर वाटसन 0.3 ओवर की गेंदबाजी। पहला ओवर खर्चीला गया और उसी का दबाव अब जाके नजर आ रहा है इस ओवर में। बेसबार, शानदार, बेहतरीन स्ट्रोक, एक बाउंस के साथ गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब स्ट्रोक, वाइड लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर लपेट के इस बार स्ट्रोक लिया। शॉट ऑफ लेंगे गेंद ऑफ स्टंप से बाहर ऑन साइड में लपेट के स्ट्रोक खेला। आदिल पोलार्ड ने बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट और इस चौके के साथ 29 बगैर किसी नुकसान के। मुनव्वर, जब शुरुआत में आप सही दिशा और सही लंबाई के साथ गेंदबाजी नहीं करते तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले गेंदबाजों के ऊपर भी बल्लेबाज आगे आते हैं। और जब शुरुआत में बल्लेबाजों के बल्ले से बेहतरीन शॉट्स लगते हैं और बल्ले के बीचों बीच लेकर जब वो स्ट्रोक्स लेते हैं तो निश्चित तौर पे उनका मनोबल सातों आसमानों पे चला जाता है और फिर उनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, भले ही आपके पास कितना भी तजुर्बा क्यों ना हो। क्योंकि आबिद नबी के विरुद्ध आपने 20 रन बटोरे पहले ओवर में और वहां से कहीं ना कहीं वापसी का ऐलान है। इस मुकाबले में कहीं ना कहीं बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर क्या होगी इस बार? क्या नो बॉल का इशारा था वह अंपायर का? शायद
वो स्टंपिंग वहां पे की है। अगर हम बात करें उमर वाटसन ने इस गेंद पर 2 रन मिलेंगे। एक चहलकदमी करते हुए रन मुकम्मल की दानिश एबीडी ने और उसके साथ साथ आदिल पोलार्ड ने, और 1 रन मुकम्मल की। यहाँ पे 1 रन आई नो बॉल की सूरत में, ये आप देख सकते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ओवर स्टंपिंग वहां पे करते हुए उमर वाटसन फुल टॉस बना के ओवर स्टंपिंग वहां पे की है। 2 रन इस गेंद पर। इन 2 रनों के साथ 31 टीम के रन से किया बगैर किसी नुकसान के 1.5 ओवर की समाप्ति के बाद दानिश एबीडी 14 पे। हालांकि ये बल्लेबाज काफी मुश्किलातों में डाल सकता है पंचाल वॉरियर्स की टीम को। इस बार ऑन साइड में खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और बेहतरीन चौका दानिश एबीडी के बल्ले से। इस चौके के साथ 35 पे टीम के रन से क्या पहुंची। मात्र नतीम 2 ओवर पारी के समाप्त हुए। कमाल की बल्लेबाजी, पहले ओवर में 20, इस ओवर में 15। Exactly, Latif. That is exactly the start they would have wanted. They are playing against a quality side, Panchal Warriors. And we have seen in the last outing, Panchal Warriors chasing 216 as if it was everyday job. And that is why they come up with a reputation of scoring runs, big runs in this tournament. And you got to score big, no two ways about it. I think 250 is exactly what they should be hoping for. Remember, very important game for Valley Fresh. If they go on to win this match, they will do their chances of World of Good to qualify for that knockout stage. And same goes for the Panchal Warriors. They are on the knife's edge. Remember, they have lost 2 games in this tournament already. Only one. And Umar Lefty is the man starting a fresh work from the hospital. Good start this. Remember last outing of Umar Lefty picking up 3 wickets for his side. Abid Nabi has been changed. Remember, we have seen in this tournament, throughout in this tournament, that Abid Nabi bowled his 4 overs quota back to back without taking a rest. And today you can see the change in plan there. First up, Umar Lefty, all new 3 bowlers bowling first 3 overs. Something new from Danish Rafiq. He's a young captain, dynamic captain. He knows a thing or 2 about this club. This time on the stumps, plays it gently back to the bowler. No question of a run. We were talking about the weather, Munawar Tanveer, and finally some respite. You can see some clouds building up, and finally that sun, absolute hot, scorching, unforgiving sun, is taking a rest. And we all were just waiting for a weather like this, finally having some. If the rain keeps away, this is the exact kind of weather we want, day in and day out. Yeah, exactly. We need this kind of weather for next couple of days. Amir, he's enjoying. He's having verve and vim, but we know what we are doing, what we are going through. And the officials know better than us. They're feeling that heat out in the middle. Sometimes, even yesterday, I heard that Hassan, one of our key members, was controlling in the control room. And he fainted because of that hot and humid climate here at the center. But this is the blessing of Allah for quite some time, I can say. In the longer run, we need that heat because you know that crop production is important. And this is agricultural state. We need to understand that. We depend on agriculture as well as horticulture sector. बिल्कुल मुनव्वर, उर्दू भाषा में जो कहा जाता है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो जरूर। अगर हम बात करेंगे बादल आकाश, नदीम, It is not always the sunlight, Munawar bhai. Sometimes rain is too needed for those crops, and we have had absolute plenty of sunshine throughout. Whenever there is rain, look what a religion says. It's the blessing of Allah. When it becomes excessive, then it may become a disaster, but mostly it is the blessing. So clouds as well as sunshine, both are equally important for this planet. And likewise for cricket, and talking about physique and our mental health as well as physique, it's important. The sun as well as the shade. Exactly, Munawar bhai. It has to be in balance. Yeah, exactly. And that's exactly what we need. So right now, the breeze is blowing and we are just feeling absolutely comfortable. So are the players in the middle, and we are in for a good match here. Falah, goal chain, 38 for none. And he goes for it. Thumps it, 1 bounce on the rope, 4 more runs to Falah goal chain, and what a start it has been. 42 for now, none. One number 3 ticks by. बेहतरीन बल्लेबाजी और उम्दा शुरुआत, जो शुरुआत मिलनी चाहिए अल फलाह कोल्ड चेन को, वो शुरुआत देते हुए
आदिल पोलार्ड और उसके साथ साथ बढ़िया योगदान जो रहा है दानिश एबीडी का, कमाल की पारी, उम्दा पारी, शानदार स्ट्रोक्स दानिश एबीडी के बल्ले से अभी तक लगे हैं। और ये जो पिछला स्ट्रोक था बिल्कुल वहां पे फ्रंट फुट पर आए और गेंद को वाइडिश कौ कॉर्नर के ऊपर से उठाया था, एक बाउंस के साथ गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। फिर से आबिद नबी एक और ओवर डालने के लिए आएंगे, हालांकि पहला ओवर खर्चीला गया, 20 रन उस ओवर में आए, पिछला ओवर भी काफी खर्चीला गया। उमर लेफ्टी का अगर हम बात करें तो फिलहाल आबिद नबी एक और ओवर डालने के लिए आएंगे। क्या इस ओवर में वो विकेट निकालेंगे, क्या दबाव लाने में कामयाब होंगे, अल-फलाह कोल्ड चेन के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब होंगे, वो अभी देखना बाकी। मार रहे पहली गेंद, बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, मुकम्मल तौर पे गेंद की दिशा और लंबाई को माप नहीं पाए वहां पे आदिल पोलार्ड। गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लेने के बाद गेंद चली गई तकरीबन शॉट फाइल लेग क्षेत्र में, उस फील्डर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं, 42-42 बगैर किसी नुकसान के 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर पारी का ये मात्र चौथा ओवर जारी है। अगली गेंद लेकर इस बार पैरों पे लगी, क्या पहले नहीं, पहले गेंद शायद बल्ले से लगी थी संभाते, उसके बाद पैरों पे जाके गेंद टकराई, बल बचे आदिल पोलार्ड। इस गेंद पर अच्छी गेंद थी, सीधी रहती हुई गेंद अक्रॉस द लाइन वहां पे गए थे आदिल पोलार्ड, लेकिन मुकम्मल तौर पे बीट हुए। गेंद पैरों से टकराने के बाद वहीं पे पास में लौट गई, इस गेंद पर कोई रन नहीं, 42 बगैर किसी नुकसान के। अगली गेंद डालने के लिए तैयार, इस बार ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर, ओवर पिच बना के खूबसूरती के साथ गेंद को उठाया, एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट, ओवर पिच बना के फ्रंट फुट पर आकर इस बार तकरीबन कवर ड्राइव के अंदाज में गेंद को उठाया और अपिच ड्राइव 4 रनों के लिए। ये आप देख सकते हो, शानदार उम्दा गजब का स्ट्रोक आदिल पोलार्ड का, फ्रंट फुट पर आए, वहां पे आमंत्रण किया गया। अगर हम बात करेंगे आबिद नबी द्वारा आदिल पोलार्ड को, क्या फ्रंट फुट पर आए और बड़े शॉट के लिए जाए, मार रहे फिर से अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आई, लेग स्टंप के आसपास आ रही थी, शफल किया, स्टंप्स को कवर किया, ऑन साइड में अक्रॉस द लाइन बल्ला चलाया और गेंद तकरीबन चली गई ठीक स्पाल लेग क्षेत्र में, उस और वाल की तरह फील्डिंग कर रहे हैं शाहिद गनी, उन्होंने गेंद को उठाया 1 रन और इस 1 रन के साथ 47 बगैर किसी नुकसान के। अच्छी बल्लेबाजी, शुरुआत बढ़िया, यहाँ पे अल-फलाह कोल्ड चेन को मिलती हुई विकेट की तलाश में। शुरुआत में अगर हम बात करें पंचाल वॉरियर्स की टीम अगली गेंद को फिर से निकाला, खूबसूरती के साथ कलाइयों का उपयोग करते हुए, बड़े इत्मीनान के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदले, इस 1 रन के साथ 49 बगैर किसी नुकसान के। पावर प्ले में जिस प्रकार का लाभ लेना चाहिए उस प्रकार का लाभ लेते हुए दानिश एबीडी और उसके साथ साथ आदिल पोलार्ड 49 बगैर किसी नुकसान के। और पावर प्ले की बात करेंगे तो पावर प्ले में अच्छे खासे रन पहले मुकाबले में भी बने थे। अगर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात करेंगे, 6 ओवर में 90 रन बने थे। और ये जो आज विकेट बनाया गया, बल्लेबाजों की ओर पूर्ण आज ये विकेट बनाया गया है, गेंदबाजों को कुछ भी मदद नहीं मिल रही। जिस तरह से मुनव्वर के साथ पहली पारी में हमें पहले मुकाबले की पहली पारी में उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि यहाँ पे कुछ अलग करना होगा, एक साधारण सी गेंदबाजी चलेगी नहीं, आपके विरुद्ध अटैक किया जाएगा, कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग सोच विचार के साथ गेंदबाजी करनी होगी। और उस प्रकार की गेंदबाजी कि अगर हम बात करें तो बेहतर कौन जाता है, आबिद नबी जाते हैं निश्चित तौर पे। International under-19, then playing ICL, and he was taken to the cleaners in that game by Lahore Badshah. They were 2. And it's 49 for none. And you know, Abid Nabi is a big name. Even I was talking about this lad in previous 2 overs, that he was part of Indian under-19 squad who took a lot of wickets, and the 5-wicket haul, I think, once in England. And that day, All India Radio and Radio Kashmir Srinagar highlighted his effort there, and everyone was talking about that he's making Kashmir feel proud there. Then he was part of MRF Academy, and he played at ICL, that league, Indian Cricket League, and that one gone fine. Beats the man down to the boundary for 450 partnership of 26 balls. It's 53, Adil 22, and Danish 26.
And it's 53 runs ensured by the top order here. Openers going nice. And this is the start the captain would have wanted. The management will be pretty happy. Looking at their top order, looking at the openers. Putting on a show here. This time, down to the mid-on for 4. Nobody's going to stop that. And how come they stop it? And look at the ball. Look at that shot. It changed its orientation and direction in the air. He was eyeing straight over the mid-on, but it changed its direction a little bit in air. I think there is gentle breeze on its way that changed its direction. When it comes to the swing of the ball, you know, there is a branch in physics, or the branch in physics which deals with the swing of the ball. That is known as aerodynamics. That straight deals with it. That does apply when it comes to the swing of the ball. And look at that one. Skimper through quickly. Leg by signal. There was an invert moment in Decker. He was on top of that. Unable to bat onto the ball. Pad is helping him there. And my colleague was talking about that Abid Nabi knows how to mix it here on a surface which is belter, which is full of runs. Quite white wall benign. Onto the front foot against the likes of Mohammad Umar. And another boundary. Runs are flowing here. They're unable to stop these runs here. Just look at that shot. Step out and then slapping it away for a magnificent boundary. Umar has to mend his lines here. He has to find a way. Well, it is 62 for none. We are in the over number 5. Well, everyone has his opinion, Nadeem and Latif Saab. Everyone has his opinion. You can't stop anyone. So one can write his, her opinion. So my message is going to be, whosoever drops a comment, whosoever talks about something, he may be knowing better than us and he may having that information. So let's see how things will improve and how things will change in the coming days. People have their right to drop their comments and write about or commentary which is going on, because you can't bring that fake fame into this. When the game is going one-sided, you can't talk about this is evenly poisoned. So how come you explain that? When one side is dominating, you have to explain that. Another side is playing that stressed cricket, we can say, or the recessive end. So how come you say they're also looking very strong? This has to be the case. So thank you very much for your feedback, for your assisting feedback. I really extend welcome and wholeheartedly I welcome you all for your assisting feedback, dropping your comments. I welcome you once again. And if we need to improve in some of the areas, we will try our level best. But it's your feedback. That's important. At least we're going to take it. But it should be in a proper manner. It should be meaningful and it should be where there is a mean. If it is meaningless, so we can't take it because it is just rubbish. And I think some of the listeners and the viewers, they're having problems with understanding English. So it's better to find somewhere else. There are so many tournaments going on. There are idle gossips going on. You can go through and watch other videos. Why too intelligent? This one, that is a cracking shot. What a blow. And what a shot. That is a great connection and it flies all the way for a maximum. And that's gone. Dismiss you. It was asking to be hit. So does he inside the line. And we're talking about the experience of Abid Nabi. He has played for country at under 19 level. He was part of ICL. He has played domestic level cricket. But today isn't his day. He's going for runs. This is natural. If it is a new day, you can't shine. This is absolute carnage. 32 from his 2 overs so far. And they are taking him to the cleaners this time. Steep bounce there. And much needed dot ball for Falah for Panchal Warriors there. Remember, they are on the knife's edge. Panchal Warriors, they have to win this to qualify for that knockout stage. Full again, rocks it. There is the protection in the deep just for a single. And Munawar and Latif by AB de Villiers and
Pollard is the nickname of these two, and they are playing like the duo. What a start this for Falah. 14 runs per over. And this has absolutely rocked Panchal Warriors. He goes again, and it has done the distance with ease. What coverage, exhibition of power hitting by the man there. Pollard goes for it, connects it. In fact, it's ABD this time. And Abid Nabi keeps on leaking runs. And Panchal Warriors keep on being on the back foot. Nothing for them so far. Everything going Al Falah's way. Look at that for a shot. Goodness gracious me. It was in the slot all right. But it still had to be picked and hit for a 6. And he does. Much needed breather for the batsmen. They deserve every bit of that. Latif, how do you see this start? बेहतरीन शुरुआत और विस्फोटक बल्लेबाजी फिलहाल जारी है। अगर हम बात करेंगे आदिल पोलार्ड और उसके साथ साथ दानिश एबीडी द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे जितने भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने कमेंट्स लगातार हमारे लिए भेज रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप भेज सकते हैं। यू हैव राइट, आपके पास है हक है, आप कमेंट भेज सकते हैं। लेकिन हमेशा जब लाइव पे हम होते हैं, कोई भी कमेंटेटर जब लाइव पे होता है, आप लाइव में एक ऐसा कमेंट भेजते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं रहता है कमेंटेटर्स के लिए, और उसको काफी लोग देखते हैं, और फिर न जाने किस नजर से आपको लोग देखेंगे। मुनव्वर जो हमारे साथ शो तो जुड़े हुए हैं, तो बेहतर यही रहता है कि आप अगर चाहो तो अच्छा कमेंट भेज सकते हैं, और नहीं तो आप खराब कमेंट भी ना भेजें, उससे आपकी इमेज खराब हो जाएगी और कमेंटेटर्स का कुछ भी नहीं जाता है। और निश्चित तौर पे ये हमारी विनती और निवेदन रहेगा अगर हम बात करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। 83 यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, आगे उगलती हुई बल्लेबाजी, ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को उठा दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, शरीर से दूर, लेकिन कनेक्शन लाजवाब, और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और बेहतरीन छक्का, लाजवाब छक्का। पंचाल वॉरियर्स के गेंदबाजों की एक भी नहीं चल रही है। उसके पीछे कारण है कि विकेट ऐसा बनाया गया है, जब तक आप वेरिएशंस अपनी गेंदबाजी में ना लाओगे, जब तक आप कुछ अलग नहीं सोचोगे अपनी गेंदबाजी में, तब तक आपको पीटा जाएगा, तब तक आपकी गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाज हावी आ जाएंगे। 6 के बाद 89 बगैर किसी नुकसान के। हालांकि पहले मुकाबले की पहली पारी में हमने इसके बाद इसके ऊपर बातचीत छेड़ी थी मुनव्वर साहब से कि ये जो पिच है आज कुछ अलग तरीके का बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। गेंदबाजों को आज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मदद नहीं मिलेगी, बल्लेबाजों को आज मदद मिलेगी। बल्लेबाजों के लिए मैदान फिलहाल कारगर, ये पिच कारगर साबित होता हुआ। बेहतर आपके लिए होगा कि आप वेरिएशंस के थ्रू गेंदबाजी करें, स्लोवर डालिए। इशफाक ब्रेस्टन को परिवर्तन के तौर पे अब लाया गया। 3 ओवर की गेंदबाजी, आबिद नबी से 45 रन उन्होंने अभी तक दिए हैं अपने 3 ओवर में, और यहां से फिलहाल आदिल पोलार्ड 33 पे दानिश ने अपना अर्धशतक मुकम्मल किया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 18 गेंदों पे 300 के आसपास उनकी स्ट्राइक रेट है, और उस स्ट्राइक रेट से 280 के आसपास उनकी स्ट्राइक रेट, उस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए कमाल के स्ट्रोक्स, नो लुक वो स्ट्रोक जो खेला था उन्होंने, वो गजब का था। डीप वाइड स्क्वायर लेग के ऊपर से वो स्ट्रोक लिया था, लाजवाब स्ट्रोक था अगर हम बात करेंगे दानिश एबीडी का। हालांकि आदिल पोलार्ड भी खुल के साथ निभा रहे हैं। आदिल पोलार्ड ने अभी तक 33 रन बनाए 19 गेंदों का सामना करने के बाद। पहली गेंद इशफाक ब्रेस्टन की अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आई, लेकिन फ्रंट फुट पर आई, जरूर गेंद को प्लेस किया हल्के हाथों से ऑफ साइड में। 1 रन के लिए, इस 1 रन के साथ टीम के रन संख्या आगे बढ़ती हुई 90 पे जाके पहुंचे 6.1 ओवर की समाप्ति के बाद। आकर्षक पारी, जैसे कि सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने पहले मुकाबले में की दूसरी पारी में खेली थी, खासकर आसिम बशीर ने वो जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उसी प्रकार का यहाँ पे हाव भाव जो है नजर आ रहा है दानिश एबीडी का भी। अच्छी गेंद थी, इस बार बैकफुट पे चले गए, गेंद को अंतिम क्षणों में आड़े बल्ले से खेला है, और गेंद शॉट बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में चली गई। वहां से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में, रनों पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। न केवल बड़े शॉट्स आ रहे हैं, बल्कि स्ट्राइक रोटेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, जो कि एक अच्छी सोच रहती है बल्लेबाजों की। आदिल पोलार्ड 34 पे, दानिश एबीडी 51 पे,
और उसके साथ साथ इशफाक भट्ट जो गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक अच्छी गेंदबाजी, हालांकि अभी तक जो भी गेंदबाज आए हैं उसको पीटा गया और उनके विरुद्ध अटैकिंग बल्लेबाजी हुई, अच्छी गेंद और एक अच्छी सोच है इशफाक ब्रेस्टन की। इस बार थोड़ा सा धीमा किया, गति में परिवर्तन किया और बीट किया दाहिने हाथ के बल्लेबाज आदिल पोलार्ड को, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में उमर गुल विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे हैं। अल-फलाह, कोल्ड चेन और उसके साथ साथ पंचाल वेरियर्स के दोनों टीमों की अगर हम बात करें, डू और डाई का मुकाबला है, करो और मारो की स्थिति दोनों टीमों के लिए इस मुकाबले में बनी हुई है। जो भी टीम जीतेगी आगे जाएगी। लीजिए ब्रेस्टन के लिए एक पहली सफलता जिसकी मैं मुनव्वर बात कर रहा था। स्लोवर डालिए, बैक ऑफ द हैंड और कुछ अलग सोचे, अलग रणनीति के साथ गेंदबाजी करे, किया भाई इशफाक ब्रेस्टन ने, स्लोवर डाली। और आज जो भी गेंदबाज स्लोवर गेंदबाजी पे ज्यादा निर्भर रहेगा वो यहां से कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ेगा। बेहतरीन गेंद इशफाक ब्रेस्टन। इस बार ये देख लीजिए और इस नो बॉल को यहां पे चेक किया जा रहा है, क्या यहां पे नो बॉल है कि नहीं, ये आप देख सकते हैं। अंपायर का क्या इशारा आएगा, काफी नजदीकी से बारी बारी से देखा जा रहा है, शायद अंपायर का इशारा क्या आएगा, क्या ये नो बॉल है या नहीं। फिलहाल अंपायर चेक कर रहे हैं वहां पे, क्या इशारा आएगा थर्ड अंपायर की तरफ से, नो बॉल है या नहीं। फिलहाल फिर से चेक किया जा रहा है, शायद नजदीकी मामला हो सकता है, काफी नजदीकी मामला। ये आप देख सकते हैं इशफाक ब्रेस्टन, उनका पैर जो है बिल्कुल गेंद छोड़ने के बाद क्या बाहर निकला है क्रीज से या नहीं, फिलहाल उसको वो देख रहे हैं। थर्ड अंपायर देखना होगा क्या ये फेयर डिलीवरी है। जहां बिल्कुल, और अब जाके अंपायर का इशारा आता हुआ आउट का, तो पहला झटका आदिल पोलार्ड वापस लौटेंगे। जबरदस्त गेंद थी और निश्चित तौर पे कुछ परिवर्तन यहां पे किया अपनी गेंदबाजी में, थोड़ा सा धीमी गति से गेंद आई और मुकम्मल तौर पे बीट किया दाहिने हाथ के बल्लेबाज को, जिसकी हमने चर्चा करी। स्लोवर डाली, बैक ऑफ द हैंड शोएब भाई, और पूरी तरह से आदिल पोलार्ड को चकमा दिया, फंसाया, गेंद सीधे जाके स्टंप्स पे लगी। और इस तरीके से जिस विकेट की तलाश में थी पंचाल वेरियर्स की टीम, और अगर हम बात करेंगे दानिश रफीक टीम के कप्तान जिस विकेट की तलाश में थे, फिलहाल वो विकेट उनको मिल चुकी है। हालांकि चेहरा जो था अभी तक मुरझा हुआ नजर आ रहा था पंचाल वेरियर्स के। अगर आप देखोगे उमर गुल विकेट कीपिंग की भूमिका आज निभा रहे, लेकिन अभी भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज जमे हुए दानिश एबीडी, जिन्होंने 51 रन बनाए 19 गेंदों का सामना करने के बाद, जिन्होंने पूरी तरह से गेंदबाजों की लाइन और लेंथ के साथ खिलवाड़ किया। फरहान तायरे कब आ रहे हैं नए बल्लेबाजी करने के लिए। इशफाक ब्रेस्टन जिन्हें विकेट मिला पहली 2 गेंदों पे लगातार 2 रन, उसके बाद डॉट, उसके बाद विकेट, जिसकी तलाश में थी यहां से पंचाल वॉरियर्स। हाँ? 91 एक विकेट के नुकसान पे 6.4 ओवर की समाप्ति के बाद फरहान 0 पे और दानिश एबीडी 51 पे, और इशफाक ब्रेस्टन 4 गेंदें अभी तक डाल चुके हैं, 1 विकेट उन्होंने विकेट निकाला है, 2 रन दिए। कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में इशफाक ब्रेस्टन द्वारा, बैट पहले हुए, अगली गेंद लेकर फिर से शानदार गेंद, उम्दा गेंद फरहान के लिए, अंदर की ओर आती हुई कून बना के सीम के सहारे हल्का सा अंदर की ओर लाया, और सबसे बड़ी बात यहां पे दिशा में परिवर्तन किया। बेहतरीन गेंद, ये देख लीजिए आप, शॉट ऑफ लेंगे गेंद, सीधे बल्ले से निकालना चाहते थे, मुकम्मल तौर पे बीट हुए। और फिर से यहां पे थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया, अंपायर ने क्या नो बॉल है या नहीं, ये जरूर यहां पे देखने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, लीगल डिलीवरी, जी हाँ बिल्कुल, इशफाक ब्रेस्टन की बिल्कुल ठीक है, लीगल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, फेयर डिलीवरी है। अगर हम बात करेंगे इशफाक ब्रेस्टन की, अच्छी गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी इस मुकाबले में करते हुए, दिन का दूसरा मुकाबला आज के दिन का पंचाल ग्रुप चैंपियंस लीग लक्टिपुरा वर्ष 2026 सेकेंड एडिशन का ये कुल मिलाकर 17वां मुकाबला अब तक आ रहा है।
अल्फला कोल्ड चेन और उसके साथ साथ पंचाल वेरियर्स के मापेन ये मुकाबला फिलहाल खेला जा रहा है। 2 और डाई का मुकाबला है। बैकफुट पे जाके खूबसूरती के साथ गेंद को कट किया और गेंद डीप पॉइंट क्षेत्र में, पीछे शायद गेंद डीप पॉइंट पे बिल्कुल क्रीज के सीध में से जब तक वो गेंद को फील्ड करते 1 रन और मुनव्वर 7 ओवरों का खेल मुकम्मल। 92 1 विकेट के नुकसान पे अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती है तो कुछ अलग सोचो विचार के साथ अगर गेंदबाजी नहीं होती है तो मुझे लग रहा है 250 पौने 300 रन बनाने पड़ेंगे पंचाल वेरियर्स की टीम को दूसरी पारी में। नदीम Wickets just at the right time, and Ishfaq rested. He bowled in the power play in the previous game and went for 1 for 52. Then Danish Rafiq sensed the opportunity, brought him back in the second match with power play restrictions not on, and he impressed with the bowling spell of his. 1 for 23 from the last outing, and now continuing in a good form here, picking up a wicket in the first over, and this is exactly the stroke of luck. Another young boy on the crease, appeal for the caught behind, up goes that finger, and Farhan, the young man, comes and goes back. 2 wickets on the trot now for Panchal Warriors, exactly what they needed, and this will just make sure a fresh breath appear that from Danish Rafiq. First ball, wicket of the first ball, and now Al-Falah Cold Chain, after a brisk start, have lost their wicket number 2. Remember, winning the toss this time, this afternoon, and fielding first, Panchal Warriors. Danish Rafiq, the captain, there. And why shouldn't they chase? Look at the last game, what happened. 219 runs. Shahid Shafi is the man. He has picked that first wicket off his first ball, not Danish Rafiq. And some glitch in the scoreboard. Shahid Shafi continuing the good form with the ball in hand. Remember, 2 wickets for him in the last outing, and Panchal Warriors need him with the bat today. Remember, they chased that down in the last match with 1 wicket down only, so he couldn't bat in the previous game, but with the ball in hand, he was handy. And again, continuing in the same passion, Shahid Shafi, one of the stars from the valley. Danish Fayaz and Danish ABD
Danish ABD, what a start this. Blazing knock from him. But now, losing 2 wickets, he has to make sure that he is there for his team. Can he bail them out now? What stroke play in the power play. Absolute, exactly what Al Falah cold chain would have wanted in the power play. They got their wish. Can they score 230, 240 to test this batting lineup of Panchal Warriors, or will Panchal Warriors claw their way back in this competition? We will see. What a game we are having here. Just when we thought that Al Falah cold chain will be blowing cold today, they have come all guns blazing thanks to the opening duo of ABD and Pollard. 8 overs done, 97 for 2. And Ishfaq Preston, we were talking about Ishfaq Preston. What a change, what a turnaround for him. In the first game, gave away 52 runs, but after that, the class of the man, as they say, form is temporary, but the class is permanent. And that is exactly what we have seen. Taksim, single, sensible batting. Danish Fayaz is the man. He knows that ABD is timing the ball well, giving him the strike, and he is your man. If you want to score big, back ABD. What sensational stroke play today in the power play. One of the best in this tournament. And got Panchal Warriors off guard. This time drives it straight to the gully region. Not for any runs. A good pace of play for Panchal Warriors. They are coming back in this game after power play. 2 quick wickets for them. ABD, he has to be there. He do not has to lose his cool. He is playing a magnificent knock. Now, can he continue is what matters. Preston again comes down the track. Exactly, Russia bullet from the man. And almost losing his wicket. This is not what his team needs. Al Falah cold chain. He's a massive man for them. Colossal man if they have to get 250, 230. For that, he got to wait for the bad deliveries. Look at Ishfaq Preston is bowling in channel. A bit of a swing there. He has to show some respect to the bowler who is bowling magnificently well. Change of gears, maybe sweaty gloves, sweaty palms in this humid conditions. You can see the sweat is oozing. And you can see the change of gloves there. He will be on strike. Oh, this is good bowling. Sensational deliveries these. And Ishfaq Preston, not only is he mixing the pace very well, but he has used that short ball to the perfection there. Catching ABD off guard. And again, this is precision. This is some comeback from Panchal Warriors after going for 15 runs per over. That projected score is nosediving now. It was showing 300. And now you can see back to where it belongs. This time outside the off stump. And again, foxes him. Use of that changing pace. He's searching for a review for a wide, but it can't happen. He's not happy with the call from the umpire. But looks like it was well within that tram line. Ishfaq Preston there. You can see in the replays. Was it a wide? Oh. Touch and go. Touch and go. Just get the feeling that he got away with that one. Onto the pads. Single to end that tour. 99 for 2. 9 overs done. What to you, Latif? बहुत बहुत शुक्रिया। 99 2 विकेटों के नुकसान पे 9 ओवरों का खेल मुकम्मल। अच्छी बल्लेबाजी सूझबूझ भरी पारी अभी तक हुई है।
दानिश बेटी और उसके साथ साथ आदिल पोलार्ड द्वारा, जिन्होंने आज शुरुआत जबरदस्त दी है अल-फलाह कोल्ड चेन को। दानिश बेटी जिन्होंने अभी तक 54 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना किया। और दानिश फयाज की बात करेंगे, 4 गेंदों का सामना किया, 4 रन बना के खेल रहे हैं। इशफाक ब्रेस्टन ने आज काफी प्रभावित किया, 2 ओवर की गेंदबाजी की, 2 ओवर में मात्र 5 रन दिए और 1 विकेट लिया। जो ब्रेक थ्रू अभी तक दिया है, एक विकेट जो मिला है पंचाल वॉरियर्स की टीम को, वो इशफाक ब्रेस्टन के नाम, जिन्होंने पहले ही ओवर में एक स्लोवर पे आदिल पोलार्ड को चलता किया। इस ओवर की पहली गेंद शाहिद शफी आ रहे हैं, अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पे जाके कट किया था जोरदार तरीके से, लेकिन पीछे उमर लेफ्टी उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं। 99 2 विकेटों के नुकसान पे 9.1 ओवर की समाप्ति के बाद एक और गेंद लेकर दानिश बेटी वहां पे तैयार, कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद, पीछे फील्डर, क्या पहुंच पाएंगे? जी हां, पीछे वॉल की तरह शाहिद गनी, उन्होंने कैच को लपक लिया। तो इस तरीके से दूसरा झटका एक बड़ी विकेट में समझता हूं, यहां पे कदमों का इस्तेमाल किया, ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, शाहिद शफी के विरुद्ध फ्लाइट दी, आमंत्रण किया गया बल्लेबाज को कि वो बाहर आए क्रीज छोड़ के और बड़े शॉट के लिए जाए, लेकिन बड़ा शॉट जरूर खेला, लेकिन फील्डर को छका नहीं पाए शाहिद गनी को। उन्होंने डीप तकरीबन काउ कार्नर क्षेत्र में वो थे, उन्होंने कैच को लपक लिया, एक बड़ी विकेट। दानिश एबीडी वापस लौट चुके हैं 54 रन बना के 27 गेंदों का सामना करने के बाद। शाहिद गनी ने इस कैच को, मोहम्मद साद जो है उन्होंने इस कैच को लपक लिया। मोहम्मद साद जो कि शाहिद गनी के बेटे हैं, मोहम्मद साद ने इस कैच को लपक लिया। उन्होंने मोहम्मद साद के नाम पे अपना प्रोफाइल रखा है, अपना नाम रखा है। 99 3 विकेटों के नुकसान पे अल-फलाह कोल्ड चेन पहली पारी में टॉस हार के उन्हें न्योता दिया है, न्योता मिला है पंचाल वॉरियर्स की तरफ से। Three for 99 after 9.2. We have a massive message coming in. We have inaugural game on 7th of July coming you from Sir Hamadan, a place which is really lovely, which is nice to host cricket. We have a wonderful turf there, and luckily we have AC working here in the com box. That's what we needed. We waited for it finally. Wait is over, and worth the wait. It is here. Cater it now because we have we have faced a lot of scorching here. We bear a lot of scorching atmosphere early morning and this afternoon. Now, luckily, it's okay now. Farhan Wani is there, and look at the goodwill gesture from players of Panchal Warriors there. And this is what we need. We should treat each and every human being in a proper manner. That's what we have been taught. This is how we have been brought up. 1929 runs under his belt as far as cricket is concerned. He's capturing these moments there. The Panchal Warriors in the middle. It's time for the advertised break again. Ad break is going on.
Falah again, 3 for 99. I announced that on the 7th of July there is inaugural game coming between Sultans and the Royals of the Valley. It will be Sir Hamadan hosting that all-important tournament. Well, it's 3 for 99 in the 10th over. As we watch Shahid Shafi again. Shahid, he's a wonderful prospect. He can ball, he can bat. He's a good fielder too. He's a gun fielder. Three-dimensional character in the lineup. He's got all the basics covered and cleared. It's 99 for 3. Amir and Danish in the middle. Is the fresh pair out in the middle. Will they resurrect here? From here on, they need to study the ship and look for a partnership here. Try to build that. This is important for Falah Kolchen after being put into bat by Panchal Warriors. Gets hit on the pad. Up goes the finger. He was right in front. Deadwood plum. Up goes the finger. Curtain is down. On Ahmed there, it's wicket number 4 down. And what is Umar Lapti doing there? He kisses the turf for a while and take a look again. We're going to go through this one again. Why he was smiling? What's the reason? Why he behaved like this? He's a gentleman. He's a gentle lad. Take a look again. Looks plumb from this angle. Looks okay. And take a look. Oh, that. We can't see that again. What he was trying to do and what was the message from Umar Lefty. What he was trying to convey. From this angle, even from this angle, you can see that. He was right in front. Middle and leg. It was going on to hit either middle or leg. 9.4, 99 for the loss of 4. Another one. Oh, look at his spell. He has picked up 3. Nadeem, what he is doing? He's ruling the roost with the ball. और सपोर्ट हमेशा रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब मलिक, विजन कश्मीर। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब मलिक, विजन कश्मीर। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा रहे। He has got, he has played 99. This is going to be his 100th game here. Is he going to create history? Let's see what he's going to do in his 100th game. It's a milestone. He's got a slip in place for newcomer Imran Gale. What a name he's got. Imran Gale, first ball. They have ABD, they have Plod, they have Gale in the lineup. The local Gale, local ABD, and local Plod. Not the Plod we used to watch from Caribbean. And bowlers use it to look for cover. When Pollard used it to bat out of his skin, and so was the case with the Chris Gale or the Christopher Henry Gale or the Chris Typone Gale. It's 99 for 4. Checkered his shot in the end. Successful comes to an end. Double strike. It's a double wicket Madden from Shahid there. Successful over. One of the best in this innings. 2 overs, 3 wickets, 5 runs. Ashfaq 2 was 1 for 5. And Abid Nabi 3 was none for 45. Expensive the lot. Economy of 13 or 15. 15 I think. 15. And take a look. Some of the big building blocks. First 20. Then it was over number 5 where we saw 21 coming. Some of the big overs. Now credit to the Shahid Shafi who bowled some tight overs, clutch overs. Look, 2 overs, 3 wickets and 5 runs. This is a comeback. Wonderful comeback. Putting huge amount of pressure. Out of 4, 3 falling into his kitty. Down to Danish and Imran Gale. Now it's up to this pair. At least look for a partnership here. Find gaps. You have plenty of gaps on either side. We can see that plenty of fielders on offside, heavily caught in it, but still there are gaps. There are areas you can penetrate and you can look for singles and convert ones into twos. Conversion is important. Cut hard, should beat the man, and that one is going to race away to the boundary for 4. You got to beat the man on edge of the circle. You're going to pick 4. He picks up a boundary here.
that were brought to you by KIS. Outfield is lightning quick. Outfield is taking care of the rest. It's cloudy now. It's gone cloudy. More cloud cover coming in now. Taking the stadium in its control. Almost in its warm. It's 103 for 4. 100 up with that boundary. The next one is a dot. Danish Rafiq has got the ball. Little back away, but find his man in place. Unable to find that gap. This happens to you. When you lose wickets in quick succession, this is going to happen. It will take some time to regain and recover. That's in the air, and it's over the man there. Once again, pass to the man at backward a point. Into the point boundary for 4. This is second boundary into the over. Fortune favors the brave. Bravado in approach. You got to be brave. You got to be gutsy. And so is the case with the batter there. He slashes out. Doesn't bother to keep it down. And he was damn sure that he's right in position to dispatch it away. This time Ajishwan playing little away from the body. No run there. 11 gone. 107 for 4. Is it a ball to go in this over? A correction comes in. Shaheen Saab is here. Shaheen Iqbal. Oh, Ashfaq Saab is also here. Thank you, sir, for your presence. Ashfaq Saab, the man behind this event. He's putting in a lot of effort. Ashfaq Saab, MD Panchal Group, arrives here at Locktipora. He is the title sponsor, such a big name. And his team is out on the field today. They're fighting it out. They were going really nice. I remind you, ad break is going on. Advertisements are important nowadays. It's because of the brand. We're able to keep alive or cost. Back along the track, not for runs. It's a dot. We're into the 12th over, 4 down, 108 on the board. Nadeem smiling. So is Latif Saab here, having some fun. Dear beloved listeners and viewers, thank you very much for your love. You're really backing us. Thank you very much. If someone is hurt because of you guys, and we apologize to you guys, so don't lose temper. My words are always going to be my line. One-liner is going to, hey, dude, don't be rude. Come on, this is world. We have to leave this. 109 for 4. Well, this is the over number 12 we're in. So every day is a new day. One has to go through tough times. Nobody is complete. We will learn the lesson with every passing day because life is all about learning new things and finding new venues and avenues. How to equip and enhance yourselves. This is how life goes on. It's 109 for 4 in the 12th over. Drives the ball. Good looking shot in the gap. Straight to long off. That's a good shot. That's a brilliant connection. This is important. And would like to thank State Sports Live for bringing us to this part of the world. And oh, look, we are on your screen right now. This is our com box area. And thank you for showing this angle where we are doing it. Bashir Saab is mixing it up nicely here. Oh, flicked away. Round the corner he goes. Has he find the gap? No, he finds the man in place. It's important to find the gaps here. You got to fit in the boots of top order the way they batted. This is the 12th over we are in. Silver through the air. Sharid is mixing it up nicely here. This is the proper way to deal with this sort of a turf. When there is nothing, when it is a dead rubber, it is absolute dead wicket. You got to mix it up here. And thank you very much, Nadeem. And we got Latif in the com box. And you can see us on air right now.
111. Nelson for the loss of 4. We are into the 12th over. Comment is not about talking about 4s and 6s. You have to talk about the topography of the venue. You have to discuss the accessibility or the accessibility of the venue. You have to talk about the texture, the culture of the area. That's also important. That's equally important. Because gone are the days you were talking about just 4s and 6s. Life is beyond that. Cricket is not just a game of glorious uncertainties. It's a medium that is bridging between communities and societies. Yeah, exactly. Here in Kashmir, we have a different taste. People have developed that. And this is the guest gallery area where we have Ashfaq Saab, the title sponsor Shafi Saab from Sir Hamadan. They're hosting a tournament there. And Shaheen Iqbal Saab is also there. He's a good friend of mine. He always texts me on WhatsApp and other ways. He's calling me in between. We talk to each other in between. And I need, whenever I need that score ticker, score link, and he's there to provide me. Whenever I call him, and he's saying, Munawar, just wait on. The next one worked away nicely. These are important things. Believe me, commentary is evolved. Gone are the days, 4s and 6s. Try to understand. Please think properly over it. You are still living in 1926. It's 2026. Believe me, people are looking forward. Radios are gone. Yeah, we know that radio has played a significant role. No doubt, nobody can overcome that. Even TV, television, or the mobile, or the mojo can't do that mojo. What we use it to learn from, what we use it to earn from radio. Radio was the only source of communication. Radio was something that was heart-soothing for ages. Now we know that technology is playing its part. We have AI coming in like a storm nowadays. So life is evolving day by day. So is the cricket and the cricket commentary. There was only 90 over game or the 60 over one day played. I wasn't born then. They used it to play 60 over. Then 55 was 50 over. Now 2020 and the T10 is coming into existence. So you should understand even that Hong Kong Sixers tournament is going on. So one should understand changes are coming in. So those who are not entertaining, who are not enjoying this, just go away. And others who want to come in with something that we call the assisting period, that is important for us. We're going to take that because we need those tips. And that's going to come handy for us. It will teach us lesson because we're not complete. We have to learn the basics. With the passage of time, we're going to equip them. We're going to work on it. 114 for 4. We are in over number 13 as we watch Danish Rafiq again. 1.4 non-festival. Danish from Hospital End. These singles will surely help these to gain that confidence. Get used to the conditions here. Try to understand how the wicket is behaving. I don't think there is too much. But this is the beauty of the spinners. They're doing it here at the moment. They're mixing it up. Thank you, sir, for your presence. And he is the part and parcel of Ashfaq Saab team. Ashfaq Saab, the MD of Panchal Group. As a true warrior coming here to back these events. And he's knocked him over. Wicket number 5 down. Hop their team back to hut. But credit goes to Ashfaq Saab bringing in that combination. He has promised that he's going to bring something special and going to show the valley that we can do wonders for you. If you back us, if you join hands with us together, we're going to do something special in the coming days. Let's hope for the best that PW prevail. And we're going to see something special in the coming games here. That some of the big names from country level cricket are coming here, arriving here in this part of the world. But we got to praise these guys. Believe me, Nadeem and Latif Saab, people like Ashfaq Saab and the organizers. This is what we need in the longer run because this is a ray of hope and the way they're supporting our younger generation and even Shafi Saab from Sir Hamadan. They want to see our youth going in a right direction, prosper with the passage of time, handing them laptops, mobile pens and bats. This will surely change their complexion of the life. You know, education can change anything. Likewise, sport is doing its part nowadays. And 2 walks of life are respected across the globe. One is the cricketer of the country. I mean the sportsman of the country. Adil Kohli is smiling. And one is the sentinel of the state. Soldier of the state. Who's awake throughout the night. And we are sleeping with peace at home. With peaceful coexistence or in peaceful coexistence. It's because of those who are working on the borders, protecting as the sentinels of the state. So this is what we need to discuss in the longer run. 115 for 5 after 13 hours thanks to the Locktipora Champions League second edition which is underway, nearly carrying
to Shahid Shafi in the follow through. Shahid back for the fourth over. He's going to finish his quota here. From nowhere to this point, they have done wonders. And the miraculous job, I must say. Oh, nice comeback. No doubt about that. It is a wonderful, it's a massive comeback. Rightly mentioned by my colleague Nadeem in the com box. As they were on the receiving end, batters were enjoying the batsmanship. They were going hammer and tongue. They were 100 after 8. And they're 116 in the 14th over. 5 overs going for just 16. He's working as a statistician here. And we've seen 4 wickets falling. And this is what's happening here at the center. This is how it's unfolding. That's the beauty of cricket. It can change and turn on its head. This time inside the line. That's gone fine. Down to the final leg area. Will it trickle into the boundary? No way. It's toppled on it soon. Ball. Didn't have end flex to carry to the boundary. Oh, carry on. Didn't carry on. It's toppled on it soon all of a sudden. 118 for 5. We are in over number 14. This is Shahid again. He's here to finish his quota. Flight air drive is that one. Quality cover drive. Should beat the man. And forward written all over it. This is Atif for you. An exhibition that exudes exuberance. 1T2 for 5. A quality shot of the bat of Atif dear. Lovely. So nice. Elegant. Elegance is there. Look. Wow. Wide of the man. The next one is a batter one. Following the batter onto the middle and leg. Cramping him for space. It is a dot delivery. 122 for 5. Here's the last ball of his quota. Shahid is done with his magnificent spell of 4 overs, 3 for 15. And it's over to you. Latif Saab, 14 done, 1-2 for 5. बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर। 122 5 विकेटों के नुकसान पे 14वां ओवर पारी का मुकम्मल। शाहिद शफी ने पूरी तरह से पंचाल वॉरियर्स की टीम को इस मुकाबले में वापस खड़ा किया है और बिल्कुल जीत के दहलीज पे खड़ा किया है, क्योंकि जिस तरह से ये मुकाबला हाथ से फिसलता हुआ शुरुआती ओवर्स में जा रहा था, अब जाके बेहतरीन वापसी की है। और ये आप देख सकते होंगे शाइन साउथ कश्मीर एमडी भट्ट इशफाक साहब और उसके साथ साथ सीर हमदान के ऑर्गेनाइजर, अगर हम बात करें तो आप उनको भी स्क्रीन के बीचों बीच देख सकते होंगे। और उसके साथ साथ आप देख सकते होंगे शाहीन इकबाल और उसके साथ साथ डबल एस के एमडी, उनको भी आप स्क्रीन के बीचों बीच देख सकते होंगे। और शाजू भैया भी यहाँ पे पहुंचे हैं, पंचाल की फैमिली के साथ जुड़े हुए। खान इमरान भी वहां पे पहुंचे हैं इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। और एमडी साहब शाइन साउथ कश्मीर, बड़ा बेहतरीन योगदान रहा है। टाइटल स्पॉन्सर है अगर हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट के, पंचाल ग्रुप चैंपियंस लीग लक्टीपोरा। जिस तरह से उनका योगदान रहा है नदीम क्रिकेट की दुनिया में, हालांकि कम ही समय में क्रिकेट की दुनिया में इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। और हमेशा जो नीडी पीपल होते हैं उनके लिए काफी उनके लिए काम करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। अगर हम बात करेंगे एमडी साहब और दानिश रफी के विकेट लेने के बाद ही एमडी साहब के चेहरे पे आपने नदीम भाई देखा होगा कितनी खुशी झलक रही है। और निश्चित तौर पे कमाल की गेंदबाजी कप्तान द्वारा, बेहतरीन गेंद अंदर क्यों आई, अरे बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने थे वहां पे बाएं हाथ के बल्लेबाज इमरान गेल। अपना विकेट वहां पे गवाया इमरान गेल ने। एमडी काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिनको शाइन साउथ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है और हमेशा नीडी पीपल को काफी मदद करते हैं। क्रिकेट को काफी उरूज पे उन्होंने लिया है। हालांकि रिसेंटली आपने सुना होगा 200 तकरीबन 300 के आसपास टीम्स जो है पंचाल सुपर लीग जो वन विलेज टूर्नामेंट है उसमें हिस्सा लेने वाली हैं। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है हाजी मोहम्मद शाबान भट्ट साहब को, शाइन साउथ कश्मीर एमडी भट्ट इशफाक साहब को। और इस टूर्नामेंट के भी जो टाइटल स्पॉन्सर है, काफी बेहतरीन योगदान रहा है नदीम एमडी भट्ट इशफाक साहब का इस टूर्नामेंट को चलाने में और इस टूर्नामेंट को बढ़ावा देने में। और हमेशा इनका दिल जो है हर किसी के लिए, उनके दरवाजे हर किसी के लिए ओपन रहते हैं। अगर हम एमडी साहब की बात करें या हाजी मोहम्मद शाबान भट्ट साहब की बात करेंगे, एमडी भट्ट सब्जार साहब की बात करें या एमडी भट्ट राफी साहब की बात करें,
वो हमेशा हर किसी के साथ इक्वली ट्रीट करते हैं। और कभी कभार मैं भी पंचाल के साथ लगातार रहता हूं, कभी कभार मैंने भी नहीं देखा कि मेरे साथ भी भाई जैसा ट्रीट करता है। ये इंसान, ये पर्सनालिटी, सबसे बड़ी पर्सनालिटी जो आपके सामने स्क्रीन के बीचों बीच है, एमडी भट्ट इशफाक साहब। और दिल से आपको सल्यूट करता हूं मैं, एमडी साहब जो यहाँ पे पहुंचे हैं इस मुकाबले का मनोरंजन लेने के लिए। हालांकि उनका अपना टीम है पंचाल वेरियर्स, लेकिन आज वो इस मुकाबले का ऐसा नहीं है। इस मुकाबले की ओर नजर दौड़ाए तो बेहतरीन गेंदबाजी दानिश रफीक द्वारा फ्रंट फुट पर आए, ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, गेंद जारी है स्वीपर कवर की ओर, उमर लेफ्टी की ओर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक रन और इस एक रन के साथ 123 6 विकेटों के नुकसान पे 14.2 ओवर की समाप्ति के बाद आते 6 पे और सिमराज अभी अभी आए। एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। अगर हम बात करेंगे यहां से अल्फला कोल्ड चेन के पास इस विकेट पे काफी निर्भर रहेंगे। इस बार उठा दिया गेंद को सीधे बल्ले से और गेंद वहां पे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में चली गई। उमर लेफ्टी पीछे फंबल हुआ लेकिन उसका लाभ मिल नहीं पाया। एक रन इस गेंद पर, 2 रन मिले, शायद 1 रन इस गेंद पर मिला। और सामने रहेंगे आप सिमराज, एक गेंद का सामना किया, 1 रन बना के खेल रहे। दानिश रफीक की बात करें, टीम के कप्तान है और रिसेंटली अगर हम बात करेंगे पंचाल ग्रुप आज लॉक्टिपोरा की तरफ से यही निर्णय आया है कि अब आज से कप्तानी की बागडोर जो है, कप्तानी की भूमिका अब यहां से दानिश रफीक के पास रहेगी। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2.4 ओवर की गेंदबाजी, कोई खराब गेंदबाजी नहीं हुई है। दानिश रफीक द्वारा 2 विकेट और 16 रन अभी तक दिए हैं। लेकिन क्रेडिट गो टू शाहिद शफी, क्या कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। शायद उन्होंने भी जरूर नदीम से जानने का प्रयास करेंगे। शायद 12 रन दिए, 3 विकेट लिए अपने 4 ओवर में, और उसके साथ साथ इशफाक ब्रेसनन, और उन्होंने कहीं ना कहीं पहला जो विकेट लिया, ब्रेक थ्रू दिलाया, वहां पे आदिल पुलार को जो उन्होंने आउट किया, उसके बाद पूरी तरह से पंचाल वेरियर्स की टीम ने इस मुकाबले में कमबैक किया। अगली गेंद लेकर उठा दिया है कवर के ऊपर से, गेंद स्वीपर कवर की ओर जा रही है, पीछे आ रहे उमर लेफ्टी, वाइड इस लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से लंबा सफर तय करना पड़ा उन्हें गेंद तक पहुंचने के लिए। लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पूर्व समय एक और रन बटोरने का। 15 के बाद 126 6 विकेटों के नुकसान पे 168 तक नदीम पहुंच सकती है यहां से अगर इस तरह से रन आते हैं अल्फला कोल्ड चेन के लिए। और निश्चित तौर पे जाना चाहेगी अल्फला कोल्ड चेन कि अब जाके कहीं ना कहीं, क्योंकि धूप का नामो निशान नहीं है, बादल पूरी तरह से आकाश पे छाए हुए हैं और एमडी साहब पंचाल के हीरो बैठे हुए हैं जगह। अगर हम बात करें और इस मुकाबले का वो आनंद ले रहे हैं, आज चीफ गेस्ट भी हैं, उनके साथ एक और चीफ गेस्ट यहाँ पे आए जो इस मुकाबले का आनंद ले रहा है। आतिफ 8 पे, सिमराज 2 पे। इन दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि एक साझेदारी बनाए, एक साझेदारी की जरूरत है यहाँ से अगर इस मुकाबले को जीतना है अल्फला कोल्ड चेन की टीम को। कि आपका ऊपरी क्रम बेहतरीन गया, लेकिन मध्य क्रम के ऊपर अब निर्भर करती है यहाँ से अल्फला कोल्ड चेन, क्योंकि मध्य क्रम की अंतिम जोड़ी है ये। इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज आएंगे, हालांकि उनसे आप ज्यादा तवक्का नहीं रख सकते कि वो बड़ी पारी खेलेंगे आपके लिए, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों पे आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अपेक्षा लगा सकते हैं कि एक बड़ी जोड़ी, बड़ी साझेदारी हो और टीम। हालांकि अभी 15.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और नदीम एक समय पे शायद 8 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन बने थे। और वहीं पे आप देख लीजिए पंचाल की टीम ने किस तरह से कमबैक किया। शाहिद शरीफ के 4 ओवर कमाल के चले गए, दानिश के 3 ओवर बेहतरीन गए, इशफाक ब्रेसलिन के 2 ओवर काफी कमाल के गए। अब आप देख सकते हैं 15.2 के बाद मात्र 130, मुझे लग रहा है 30 रन बनाते बनाते 6 विकेटें, 5 विकेटें गंवानी पड़े अल्फला क्रिकेट का, अल्फला कोल्ड चेन के टीम को। Exactly. Can't believe that we were talking about the score of 260 after that absolute rollicking start. And now what are we talking about? Projected score of 168. Cannot believe it. Atif, he is a local lad from Melhura. And again, has he knocked him up? Yes, he has. This is some captaincy from Danish Rafiq. He knows that Supin is playing at a spot. Brings Adil Kohli on. And he takes the wicket straight away. What exhibition of Supin bowling here on display. Alfala Cold Chain, 130 for 6. This is some turn around in this game. We were looking for the score of 200, 250. And now
Look at that. This inning has come nose diving. And Adil Kohli joins the party. Takes a wicket there. You can see on your screens the title sponsor of this league. We wish him all the best for the future, health for his family, and as well as we hope that he progresses forward in his life. What a sport he has been for the Valley's youth. पंद्रह दशमलव पांच के बाद 130 7 विकेटों के नुकसान पे टॉस हार के पहली पारी में न्योता दिया गया। अगर हम बात करेंगे अल फलाह कोल्ड चीन के टीम को कि वो बल्लेबाजी करे और उनके हित में अगर हम बात करेंगे तो कतई तौर पे ये निर्णय दुरुस्त साबित नहीं होता हुआ। शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी हुई थी आदिल कोहली, माफ कीजिएगा आदिल पोलार्ड और दानिश एबीडी के माबैन, लेकिन उसके बाद कुछ खास बल्लेबाजी हुई नहीं। लगातार विकेट्स गिरते चले गए, विकेट्स का कॉलम बढ़ता गया और अंत पूरी तरह से संकट में फंसते हुए दानिश गेंदबाजी कर रहे हैं। एक ओवर की गेंदबाजी आदिल हुसैन से की गई, 5 रन दिए। पहली गेंद लेकर ऑफ स्टंप से बाहर, अतिरिक्त उछाल अतिरिक्त घुमाव के साथ अच्छा खासा बाउंस और उछाल लेती हुई गेंद सीधे उमर गुल के पास चली गई, हालांकि वो भी गेंद को गैदर नहीं कर पाए। अगली गेंद लेकर लेग स्टंप के आसपास आ रही थी, ऑन साइड में गेंद को कलाइयों को उपयोग करते हुए फ्रंट फुट पर आकर निकाला। गेंद चली गई इशफाक ब्रेस्निन की ओर डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। जब तक वो गेंद को उठाते थ्रू करते दोनों बल्लेबाजों के पास ऐसे में पूर्व समय था। एक और रन बटोरने का, इस एक रन के साथ 132 7 विकेटों के नुकसान पे। पूरी तरह से खराब शुरुआत इस बार सीधे बल्ले से, बॉलर इस बैक ड्राइव खेला था, हवा में गेंद कट इन बोल्ड का अवसर बना था, लेकिन इस अवसर को ले नहीं पाए टीम के कप्तान। थोड़ा सा मुश्किल था इस कैच को लपकना, हालांकि फील्डिंग वहां पे की, इस गेंद पर कोई रन नहीं। अच्छी गेंद थी, स्ट्रेट बल्ले से खेला था। ओह माय गुडनेस, ये लीजिए एक और विकेट। कमाल की गेंद, अच्छा खासा स्विंग, अच्छा खासा घुमा और उछाल प्राप्त करती हुई सीधे जाके लेग स्टंप पे लगी और इस तरीके से दानिश रफी के नाम ये तीसरी सफलता। कमाल की गेंद, ये आप देख सकते हैं। ओहो क्या बेहतरीन घुमाव यहां पे देखने को मिला। गेंद जो ही पड़ी तुरंत वहां पे अंदर की ओर आई, अच्छा खासा घुमाव। हालांकि हमने देखा कि जब भी गेंद यहाँ पे नीचे रहती है उस गेंद पे कुछ ना कुछ दुर्घटना यहाँ पे घट जाती है। नतीब, This is some bowling spin on display. Just when we were thinking that Al Falah Cold Chain are going to come in this game, they got the start, to be honest. What an amazing start. Al Falah Cold Chain induced to bat first, 1-3-2. They won't be happy with a score like this, especially the kind of start that they got. What bowling display by the captain Danish Rafiq, 3-4-18 in his last over. Just giving away runs in trickles. He has been the Gilio and Shardul Shafi also. This duo has wreaked havoc. 6 wickets between them for just 40 odd runs. Just goes to show that the amount of hard yards they have put in. And again the man, this time outside the stump, single. They have to hurry, direct hit, and he was a goner there. Not to be. They will get that extra run, but Ishfaq Brest then I guess was the fielder. Not to be. End of over number 17, 135.8. And we were talking about the weather. It is finally some respite with lots of clouds there. And will they be happy, Latif? What are you just looking at? Projected score 160 here on? Would you take that as a captain of Al Falah Cold Chain? जी
बिल्कुल। और आज हालांकि शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई गेंदबाजी से आबिद नबी, और उसके साथ साथ उमर वाटसन के विरुद्ध ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई थी आदिल पोलार्ड और उसके साथ साथ दानिश शेबिडी द्वारा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस मुकाबले में वापसी कराया है इन दो स्पिनर्स ने, बेहतरीन स्पिनर्स, अगर हम बात करेंगे शाहिद शफी और उसके साथ साथ बात करेंगे हम दानिश रफीक, कमाल की गेंदबाजी इन दोनों गेंदबाजों से अभी तक हुई है। और अब आदिल यहाँ पे आ रहे, इस बार ऑन साइड में फ्लिक के अंदाज में उठाना चाहते थे, हवा में गेंद काफी समय तक रही थी लेकिन गेंद खाली क्षेत्र में जाके गिरी। जब तक डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, एक रन और इस एक रन के साथ 17.1 के बाद टीम की रन संख्या 136, 8 विकेटों के नुकसान पे। जनरल मैनेजर भी यहाँ पे पहुंचे शिबू भैया। पंचाल के साउथ कश्मीर की शान अगर हम बात करेंगे एमडी भट्ट इशफाक साहब के साथ, हालांकि वो नहीं आए थे लेकिन अब जाके पहुंचे हैं मैदान पे। अगली गेंद लेकर स्टंप से बाहर कट किया, लेकिन गेंद को खेला था दानिश रफीक और निकल पड़े तेजी के साथ रन बनाने के लिए। इस एक रन के साथ 137, अब ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है पंचाल वॉरियर्स की टीम के ऊपर एक रन से, क्योंकि अगर यहां से बड़े शॉट लगे तो फिर मुश्किल होगा। इस बार गेंद को उठा दिया सीधे हाथों में, वहां पे शाहिद शफी, उन्होंने कैच को लपक लिया और इस तरीके से अल फलाह कोल्ड चेन को लगने वाला ये 9वां झटका। क्या कमाल की वापसी, कमाल की गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी स्पिनर्स ने यहां पे की। और यही मैं चर्चा कर रहा था कि अगर आपके पास बेस्ट स्पिनर है, आज गेंदबाजों के लिए यहां पे कुछ खास मदद नहीं है, लेकिन अगर आप सही चैनल पे सही टिप्पे पे गेंदबाजी करोगे, धीमी गति से ज्यादातर गेंदबाजी करोगे। इस बार फ्लाइट थी, फ्लाइट से चकमा दिया, पंजों के बल उछले और बड़ा शॉट लेना चाहते थे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से। गेंद ये लिख लीजिए आप, गुड जॉब आप कैमरामैन एमडी भट्ट इशफाक। अगर हम बात करेंगे मैनेजर डायरेक्टर पंचाल ग्रुप एंड ओनर ऑफ पंचाल वॉरियर्स क्रिकेट क्लब मिस्टर इशफाक साहब, मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका बिल्कुल साफ तौर पे स्क्रीन के बीचों बीच। क्रिकेट को काफी बड़ा योगदान दिया इन्होंने, क्रिकेट को काफी ऊंचाई तक पहुंचा इन्होंने, काफी बेहतरीन इंसान है शोएब भाई जो कि हमारे कॉम बॉक्स में बने हुए, उनके दिल की धड़कन है, काफी लोगों की दिल की धड़कन है। अगर हम बात करेंगे एमडी भट्ट इशफाक साहब, काफी कूल एंड काम रहते हैं, काफी कूल एंड काम कस्टमर हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया, फ्लाइटेड गेंद थी और गेंद को निकाला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। गेंद लुढ़कती हुई कारपेट के सहारे पहुंची है शाहिद शफी की ओर, जिन्होंने इससे पूर्व कैच को लपका था। इस एक रन के साथ टीम के रन संख्या 138, 9 विकेटों के नुकसान पे। और नदीम हमारे साथ जुड़े, नदीम और कितने रन भर पाएंगे पंचाल माफ कीजिएगा अल फलाह कोल्ड चेन? So far, so good. What a turnaround. And again, flights it. How many times we have seen that in this innings, that you flight the ball, you get the purchase. Al Falah Cold Chain are in absolute choppy waters right now. 138.9. Just get the feeling that from here on, they will be looking for that 160 mark. But nothing happening for them. MD Panchal Group and owner of Panchal Warriors, Mr. Ishfaq Bhatt, is here. And Latif was talking about that one village tournament that he is initiating. What a bonus. What a head start for Valley's cricket there. Free of cost. He is doing it. And so many teams have just given their consent to play in that tournament. They will participate. Abid Nabi, it has not been his day. Can he finish it up with the last one? He believes that Subin is the way to go. Starts. Oh, has a shy there. Umar Watson, not to be. Extra run will be awarded. 2 runs they are taken. Al Falah Cold Chain with the lost wicket on the crease. They need anything, whatever they get. As long as they come, they will not complain one bit. Abid Nabi there flights the ball and the batsman slips. Comedy of errors in the middle. They're sharing a laugh and a bit. You can see the people coming up, building now. The atmosphere looks good. The sun is out. The sun is off.
Oh, this is not good from Umar Watson there. Lets it go. Single is all they will get. And Panchal Warriors, you can see with their body language, they are looking a confident side now. They know that they have pushed Al Falah cold chain. Their backs are pushed against the walls. And this looks like a chase within their reach. And why not? They have to smile. This has been comeback of some sorts from them. Nabi again goes to the backward, close. They are directed and looks like a goner. He is shot. And yes, up goes that finger. No need to send it to the third umpire. Innings comes to an halt. Oh my goodness. Cricket at its best again. Just at one point of time, we were talking about the score of 250 in the same game. Who could have thought that they will be all out with some balls to spare? नदीम भाई, यही क्रिकेट को इसीलिए महान निश्चितताओं का खेल कहा जाता है। डायरेक्ट हिट और वहां पे विकेट मिला एक और अंतिम जोड़ी क्रीज पे थी और इस तरीके से यहाँ पे अब पूरी पारी सिमट गई। एक और विकेट ये देख सकते हैं आप, कैमरामैन काफी बेहतरीन काम करते हुए इस मुकाबले में और इस पूरी श्रृंखला में बेहतरीन तरीके से कैप्चर यहाँ पे करते हुए एक एक लम्हे को पे कैमरा में कैप्चर करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम श्रोताओं का जिन्होंने हमें साथ दिया। फिलहाल 141 9 10वां झटका लेके लगा है। 142 रन चाहिए कुल मिलाकर इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये दो अंपायर्स है, काफी बेहतरीन अंपायर्स है और बेहतरीन अंपायरिंग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक बेहतरीन अंपायरिंग हुई है इस टूर्नामेंट में, आज भी बेहतरीन अंपायरिंग होती हुई। फिलहाल बात मैं आपको ये बताते चलो, आसमान पे काले और सिया बादल फिलहाल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये मुकाबला हो अंतिम चरणों तक जाए। ये देख सकते हैं आप बेहतरीन विजुअल्स नदीम, और क्या कहना चाहेंगे जो ये सब्ज घास की चादर यहाँ पे उड़ी गई है इस मैदान पे, इसके बारे में फिलहाल जुड़ते हैं आपके साथ दूसरी पारी में स्टेट स्पोर्ट्स लाइव और उसके साथ साथ किस के ऑफिशियल फेसबुक पेज से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।
Welcome back. Al Falah cold chain needing just scoring just 141, and now Panchal Warriors. Al Falah cold chain sensing the opportunity. They know that how this pitch is playing. Straight away, swoop in there, and it is off Nabi from the hospital road end. Left arm orthodox swoopner there. Abid Nabi and Umar Watson. They had some blazing starts in this tournament already. Can they today to take their side to that knockout? Oh, Yoxim Percival, good start from the young man. This is cricket at its best. Look at the boy who is bowling to somebody who knows a thing or a two about cricket. Abid Nabi represented Jammu and Kashmir at state level. And Afan Nabi, this is a proud moment for him. Can he surprise him there? Left arm sweepers, usually. Handful. Oh, up goes the finger. Would you believe that? What a start for that boy. Just when we were telling that he is there to bowl that big man. And look at that smile on his face. He knows that he got the big fish. Goodness gracious me. What a start for Al Falah cold chain this. Latif. बेहतरीन गेंद यहाँ पे आफान नबी की बाएं हाथ के गेंदबाज है, अंदर की ओर हल्का सा गेंद को लाया कि इस बार टर्न और बाउंस दोनों यहाँ पे देखने को मिले। बेहतरीन गेंद आबिद नबी को यहाँ पे डाली थी और आबिद नबी एक महान खिलाड़ी। ये देख सकते हैं आप, कमाल की गेंद, कमाल का फॉलो थ्रू। ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन गेंद बिल्कुल मिडिल और लेग स्टंप के आसपास आ रही थी। फ्रंट फुट पर आकर सीधे पल्ले से खेलना चाहा वहां पे आबिद नबी ने और अपना विकेट वहां पे गवाया। और इस तरीके से आबिद नबी के रूप में ये पहला झटका पंचाल वॉरियर्स की टीम को लगा और शुरुआत में ही आदिल कोहली को आना पड़ा बल्लेबाजी करने के लिए। आफान नबी बाएं हाथ के बल्लेबाज है। अगर नदीम बात करें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध दाहिने हाथ के बल्लेबाज जब सामने रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है उनकी लाइन और लेंथ को पिक करना और उसके बाद बल्लेबाजी करना, ये काफी मुश्किल रहता है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। फिलहाल आदिल कोहली किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं ये अभी देखना बाकी। 0.2 के बाद 0, 1 विकेट के नुकसान पे पंचाल वॉरियर्स 144 का लक्ष्य उनके सामने। इस बार बैकफुट पे चले गए, गेंद को अपने ओर आने दिया और सीधे बल्ले से गेंद को खेला। तकरीबन सेलिम बेड ऑफ क्षेत्र में वहां पे सिमराज है, उन्होंने गेंद को उठाया। इस गेंद पर कोई रन नहीं। 0, 1 विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंदबाजी आफान करते हुए नजर आ रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी। एक और गेंद लेकर बाहर लेग स्टंप के आसपास गेंद आ रही थी, बड़ा शॉट लेना चाहते थे। ये देखते हुए मिडॉट ऊपर और उसके सिर के ऊपर से, उनके सिर के ऊपर से मारने का प्रयास था यहाँ पे बल्लेबाज आदिल कोहली का, लेकिन मुकम्मल तौर पे बीट हुए। हालांकि गेंद बल्ले की जड़ से टकराने के बाद ऑन साइड की ओर चली गई, पास में लुढ़क गई और गेंद को उठा गई। इस गेंद पर कोई रन नहीं। एक और गेंद लेकर इस बार फ्लाइट दी, फल्टास बना के बॉलर्स बैक ड्राइव, उम्दा शानदार स्ट्रोक और गेंद लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, फुल टॉस कर दी और आदिल कोहली पहले से तैयार थे इस प्रकार के स्ट्रोक के लिए। आप देख लीजिए, फ्रंट फुट पर आकर बल्ले के बीचों बीच लेकर सीधे बल्ले से गेंद को निकाला। उम्दा शॉट आदिल कोहली का, चौका पहले रन आते हुए पंचाल के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, उछल लेफ्ट स्ट्रोक, एक बाउंस के साथ वाइड लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए फ्लाइट दी। आदिल कोहली को आमंत्रण किया कि वो बाहर निकले, क्रीज से बाहर वही किया। ये आप देख सकते हैं, कमाल का शॉट, कमाल की बैकलिप, सीधे बल्ले से चौका यहां पे बटोरा। अजीबो गरीब स्टाइल आफान का, ये आप देख सकते हैं, सीधे बल्ले से अच्छी खासी बैकलिप के साथ, कॉपी बुक स्टाइल, उम्दा लाजवाब। और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। ये चौके के साथ 8 पे टीम की रन संख्या पहुंची 1 विकेट के नुकसान पे।
पहला ओवर आफान नबी का समाप्त। हालांकि एक विकेट एक महान खिलाड़ी आबिद नबी को चलता किया इस ओवर में। कमाल की गेंद थी वो, जिसपे आबिद नबी पूरी तरह से चूके और गेंद उनके पैरों पे जाके टकराई। स्ट्रेट गेंद थी वो, जब 2 गेंदें डाली थी, बिल्कुल सीधी गेंदें थी, कोई यहां पे घुमाव किसी प्रकार का उछाल हमें देखने को नहीं मिला। साधारण सी 2 गेंदें और दोनों गेंदों पे 2 बेहतरीन स्ट्रोक्स लगे आदिल कोहली के बल्ले से। बेहतरीन बल्लेबाजी आदिल कोहली द्वारा, और इस प्रकार की गेंदों को कहां छोड़ने वाले हैं आदिल कोहली। Exactly spot on. The stature of Adil Kohli and Umar Watson both. You give them the sniff, they will absolutely pounce on it. And suddenly now Imran Gale swooping to win. They will fancy their chances. Just get the feeling that the reputation of Adil Kohli and Umar Watson, that they are going to go with off-spinner bowling his first over. Just get the feeling that they will tee off in this over. Imran Gale, he has loads of experience. He has played for this club. And Canny Fox, Adil Kohli, they need early breakthroughs. Dream start for them. Afan Nabi in the previous over, taking the big wicket off Abid Nabi. Imran Gale. In the slot, Umar Watson joins the party and he starts. His boundary reputation is absolutely stand out in this tournament. What a knock in the previous match, and starting in the same tempo yet again. You pitch the ball, pull, Umar Watson doesn't need second invitation there. 6 for Umar Watson there. Now a change in field. He is the danger man. Falah, they have to strike. They have to take his wicket early. This time long on there. There is the protection in the form of Furqan there. Just as far as a single there. Kohli plays it down to that long on. He's a busy man, Furqan there. Now back to Umar Watson. He has played a mammoth knock of 80 odd runs in the previous chase, chasing 216. This duo absolutely demolished that and turned that game one-sided yesterday. And here they are today again with the tasks cut out. Will they come back for the second this time? He parries it. Does the fielder Simraj is the man? They will come back for the second. That's all they will get. End of over number 2. The score reads 20 for 1. इमरान गेल के पहले ओवर में 12 रन आए। अफान के पहले ओवर में 8 रन आए। एक विकेट भी उनको मिला। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में इमरान गेल द्वारा कतई तौर पे नहीं, और वो ज्यादातर जो उनका फोकस रहता है, ज्यादातर तेज गेंदबाजी करते हैं, जो कि इस पिच पे आज करना मुनासिब नहीं है गेंदबाज के लिए। जिस तरह से 3 स्पिनर्स ने, खासकर 2 स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी की थी पहली पारी में। पंचाल वॉरियर्स की तरफ से अगर हम बात करेंगे टीम के कप्तान दानिश रफीक द्वारा, और उसके साथ साथ बात करें तो उनकी एक जोड़ीदार बेहतरीन गेंदबाजी हुई थी। इमरान गेल का ओवर मुकम्मल। अफान नबी फिर से आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं वो भी देखना बाकी। 20 एक विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद अफान नबी अपने कोटी का दूसरा ओवर डालते हुए इस बार गेंद को ऑन साइड में निकाला विद द स्पिन, और गेंद 4 रनों के लिए आदिल कोहली के बल्ले से एक और शानदार चौका। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, हालांकि फ्लाइट दी थी, एक पैर बाहर निकाला, विद स्पिन गेंद को निकाला, और गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, सीमा रेखा से बाहर, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए
बेहतरीन शॉट आदिल कोहली का, ये आप देख सकते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, लपेट के इस बार स्ट्रोक लिया। अगली गेंद लेकर इस बार पैड लाइन पे गेंद थी, जानबूझ के आफान ने की थी देखिए, और अच्छी तरह से इस गेंद को पिक किया था वहां पे। आदिल कोहली ने सीधे पल्ले से फुल टॉस बना के निकाला वाइड इस लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। उस और फील्डर उड़कती हुई कारपेट के सारे उनके पास चली गई गेंद। इस 1 रन के साथ 25 पे टीम के रन से किया पंचाल वॉरियर्स। फिलहाल दूसरी पारी में टॉस हार के बल्लेबाजी कर 144 का लक्ष्य उनके सामने, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है पंचाल वॉरियर्स के सामने। अगली गेंद लेकर लेग स्टंप के आसपास आ रही थी, खूबसूरती के साथ कलाइयों का उपयोग करते हुए गेंद को मोड़ा पीछे फील्डर। जब तक वे गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पूर्व समय 2 रन बटोरने का, 2 रन और जोड़ते हुए पंचाल वॉरियर्स के खाते में 27 एक विकेट के नुकसान पे। पंचाल ग्रुप चैंपियंस लीग लक्टीपुरा वर्ष 2026 एडिशन सेकंड का एक बेहतरीन मुकाबला, 17वां मुकाबला आपकी ओर आ रहा है स्टेट स्पोर्ट्स लाइव और उसके साथ साथ किस के ऑफिशियल फेसबुक पेज से। लेकर इस बार पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, ऊंचा लेफ्टेड स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर, तकरीबन वाइडिश का कॉर्नर के ऊपर से लाजवाब उम्दा छक्का। इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस बार गेंद को उठा दिया, ग्राउंड से बाहर, स्टेडियम से बाहर गेंद जाके गिरी। बेहतरीन शॉट, उम्दा शॉट, पीछे हटे और स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, उम्दा शॉट। और इस छक्के के साथ पंचाल वॉरियर्स धीरे धीरे अपने लक्ष्य को अग्रसर होते हुए अगली गेंद को ड्राइव किया था सीधे दानिश बेडे के हाथों में, शॉट कवर क्षेत्र में 30 गज दायरे के अंदर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं, तो 2.5 के बाद 33 एक विकेट के नुकसान पे। उमर वाटसन 18 पे 7 गेंदों का सामना करने के बाद अगली गेंद का खूबसूरत लाजवाब का ड्राइव, कवर और पॉइंट के बीच में से एक पे बाहर निकाला, गेंद की पिच तक आए और कमाल का स्ट्रोक है ये उमर वाटसन का। ये आप देख सकते हैं, गेंद के पिच तक आए, गेंद को रीड किया, अंतिम क्षणों में उनका जो बिल्कुल सिर जो है बिल्कुल झुका हुआ नजर आया। बेहतरीन टाइमिंग, उम्दा टाइमिंग, कवर और पॉइंट के बीच में से गेंद अंदर आती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए 3 के बाद 37 एक विकेट के नुकसान पे। धीरे धीरे अल फलाह क्रिकेट क्लब कोल्ड चेन की बात करेंगे, उनके हाथों से मुकाबला फिसलता हुआ नजर आ रहा है। Dreams start with the ball in hand, but now it has been neutralized thanks to some swashbuckling innings. Still early days, but looks like they are set right from the dugout. Kohli hits it. He hits it for a 6 yet again. No second invitation. Adil Kohli hits it big, and Panchal Warriors are making a merry out there. Look at that. Nothing delivery, hop tracker, and 6. He goes again, this time through the covers, and result, just get the feeling it has gone all the way. Yes, 6 more, 2 in a row, and Panchal Warriors are absolutely with their noses in front in this chase. Look at that hitting from Adil Kohli and Umar Watson. These two. This time down the leg. Nothing happening for Al Falah. Runs coming thick and fast. We will wait for the umpire signal. It's a wide. 5 wides. And this one from the captain is going from bad to worse. Started with 2 sixes in a row. Now 5 wides. Just 2 deliveries and 17 runs from this one so far. Goodness gracious me, look at that required run rate. It has come crashing down. And now, Adil Hussain, 10 balls, 27 runs, 270 the strike rate. Oh goodness gracious me, what a start for Panchal Warriors. They have put Al Falah on the back foot straight away. In the slot, and towards our com box. It has gone all the way for 6 yet again.
Would you believe that? 23 from just 3 deliveries. And this is turning it on, Latif. उम्दा शॉट इस बार पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और गेंद सीमा रेखा से बाहर। आदिल कोहली के बल्ले से यह छक्का आया, 11 गेंदों का सामना किया, 33 स्पिन बाद 200 की स्ट्राइक, शायद 300 की स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। कमाल की पारी आदिल कोहली द्वारा, 82 की आवश्यकता 99 गेंदों से 4.97। पंचाल वॉरियर्स धीरे धीरे इस मुकाबले को जीतती हुई नजर आ रही है। लगातार आदिल कोहली का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आ रहा है लक्टीपोरा के मैदान पे। कमाल की पारी, और बैकफुट पे जाके स्ट्रोक के लिए जगह बनाना और फिर इतने बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक खेलना। और रोहित शर्मा इंडिया के स्कीपर मुझे याद आ रहे हैं, वो भी जब स्ट्रोक्स खेलते थे, हालांकि ज्यादा समय उनको नहीं मिलता था, ज्यादा टाइम नहीं मिलता था स्ट्रोक के लिए कमिट होने में, लेकिन जब वो स्ट्रोक लेते थे वो लाजवाब रहते थे। वही आदिल कोहली के यहां पे करते हुए कमाल की पारी पंचाल वॉरियर्स के लिए खेलते हुए। 60 टीम की रन संख्या, ऑफ स्टंप से बाहर कट किया जोरदार तरीके से और 30 गज दायरे के अंदर गेंद नहीं रोकी, गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और चौके के लिए बैकफुट पे जाके शरीर से बाहर गेंद थी, शॉट बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच में से करारा स्ट्रोक लिया आदिल कोहली ने। आदिल कोहली पहुंचे 37 पे, 12 गेंदों का सामना करने के बाद 142 रन कुल मिलाकर चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल एक और गेंद लेकर अगली गेंद को निकाला है, हाफ वॉली पे लेके ड्राइव किया गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। 1 रन और। थैंक यू ब्रदर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 65 एक विकेट के नुकसान पे 77 रन चाहिए मात्र 97 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए। शाइन साउथ कश्मीर एमडी बाटिश पाक काफी खुश, अच्छी खासी बैकलिप के साथ फ्रंट फुट पर आकर सीधे बल्ले से और तालियों की गड़गड़ाहट। यहां पे अगर हम देखें तो सीटी की गड़गड़ाहट होती हुई। क्या लाजवाब छक्का है ये। उमर वाटसन 28 पे 9 गेंदों का सामना करने के बाद कमाल की पारी दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और पूरी तरह से गेंदबाजों की लाइन और लेंथ के साथ मुनवर यहां पे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं अच्छी खासी बैकलिप के साथ कितना स्ट्रोक, कितना पावर जनरेट किया स्ट्रोक के पीछे, आप देख सकते होंगे। कमाल का शॉट है ये उमर वाटसन का। 28 पे पहुंचे 9 गेंदों का सामना करने के बाद 71 पे टीम के रन से किया, 1 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर पारी का मुकम्मल। आदिल कोहली 38 पे, उमर वाटसन, शाहीन भाई भी यहां पे काफी खुश नजर आ रहे हैं जिस प्रकार की बल्लेबाजी आज यहां पे पंचाल वॉरियर्स की टीम कर रही है। कमाल की पारी आदिल कोहली और उमर वाटसन द्वारा पूरी तरह से इस मुकाबले से बाहर किया गया योजनाबद्ध तरीके से। अगर हम बात करेंगे विपक्षी टीम को यानी अल फलाह कोल्ड चेन को। मुनव्वर halfway mark and half the job is done, half needs to be done. 70 more runs needed to win the game. It's going to be a comprehensive victory for Ashfaq Butt and the team. Family is delighted at the moment as they are cashing on at the moment. It's Mahmoud Umar 28, Adil Hussain Kohli 38. And look at, thank you Bashir Saab for displaying that our chief guest, our big name with us today, that is Ashfaq Saab, the MD Panchal Group and the owner of Panchal Warriors. He's here, he has graced the occasion watching the game which is unfolding. We have Farhan here. Voice of Farhan Wani is here. And that's a great thing. Farhan, may Allah bless you. And I saw him, he was capturing some of the moments there. And he was capturing when Panchal Warriors were on the field. They sat on the field for a while and he was there to capture these moments. And I think that's the good move. And Ishfaq Sab is always such a lovely lad. And he's having that love for this generation and he's loving these persons like Farhan. And Farhan, we also love you, buddy. Keep going. It's 72 for 1. They are now 70 behind. That one, look at that one. He admires that shot. One bounce for Mohammad must stand tall and dispatched that one to the boundary. And that was brought to you by KIS.
unstoppable. And it's unstoppable Panchal Warriors, true warriors. And showing that warrior stuff here at the center. Panchal group and Panchal Warriors with that punch here on the cards and on display. It has been a wonderful character shown by the two men in the middle, Adil Hussain and Mohammad Umar. And Umar lefty is pretty happy at the moment as things are going their way. 76 on the board. We are in over number 5. Umar, you beauty! Take a look. That's gone beyond the fence onto the roadside. Mohammad Umar on to 44 of 12 balls. Umar is going on here at the center as Umar Watson sends that one. Oh, what a shot. Wow, magical one that's gone onto the roadside. There is a man waiting and watching the game. He comes to halt for a while. The biker is there. The motorcyclist is there watching the game. For round 1, he will take the man of the match. Oh, look at that one, improvised. Goodness gracious. Oh, my word. Umar Watson he goes to his 50 of 13 balls and equalize with Adil Katsur here. We'll have to wait and watch. Is it 44 or 50? Oh, I thought it's 50. No, it's just 44 there. He was 38 when that 6 came down towards long on area. The next one gone over. Fine leg for 6. Improvised. Douglas Marilla shot comes into play. 88 for 1. Thank you, Latif Saab. You want to taste it? $88 for 1. Umar 44 unbeaten of 12 balls. Look at his strike rate. He's going balle. And now banked in shot again. But Simrai says, oh, come on. I'm also going to rise to the occasion here. And if he gets to his 50 in around 4 balls, he's going to claim that A-star bat. So that means around 17th ball, he should get there. So let's see. That's going to be massive bat to be precise when it comes to the money. Money matters the most at the end of the day. He stated that's a massive one. It will cost around 20k. That's going to be a superb bat coming in for Mohammad Umar. Suma, despite this one, to claim that reward and award. Here is the next one from Simraj. Down the leg side, gonna be wide. 89 for 1. This is over number 5 we are in. 1-6 away. Mohammad Umar will claim the award. I think he's gonna go after it. Let's see. If it is in his zone, he's gonna take you on. He's gonna punish you. And Mohammad Umar is in complete control at the moment. He's loving the conditions here. Good conditions for batters. But the bowlers, they're clueless here. Look at that. That's 50 or 14 for Mohammad Umar. A round of applause. He raises the bat. Soaks in that round of applause. On their toes. The teammates in the dugout. And he will claim that A-star bat. Worth 20k. Umar, you're a happier man. You got to be happier at the end of the day as you're going to walk away with something special. Something costlier or the costliest one. 95 for 1 after 5 overs.
Afan to bowl. Afan has got the ball. 95 for 1 after 5 overs. Adil, look at that. Nadeem, you would like to watch this time and again. That is audacious. That is adorable and add-on of extra cover. Makes room and sends us that one. Packs it to perfection. Lovely. Wonderful. And an excellent shot of the bat of Adil Kohli there. Adil Hussain, famously known as Kohli. It's 100 up, 101, 41 away. Panchal Warriors to climb the victory and to walk away with 2 invaluable points. Panchal, it's punch going on from Panchal side today. They're delivering the thumping punch. Locktipora is witnessing the carnage. Adil Hussain and Mohammad Umar are playing a different level cricket today. It looks like the pair from the different planet arrived here at Locktipora today. What a touch. Whatever they are touching today, turning it into gold. That is absolutely sublime touch. Cover drive again. This one is traveling, but there is going to be field in place. Moves to 46 of 16. One ball. Oh, there is going to be overthrows. This is another misery for fielding unit. And that's 50 up for Adil Kohli. And he will also climb the bat of A-Star. 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 Come on, keep your bats ready. 2 of them for today. Plenty of bats going away. And for both the batters, one is Adil Hussain, the other one is Mohammad Umar. Both clamor the bat. And what a day they're having out on the field. It's number 2 and number 3. Climbing bats, rewards, praise is gallowed. And it's back-to-back 100 partnerships in this tournament. And that one makes room. Gets it through. That's for 110 for 1 after 5.4 or 5.3. 5.3, 110 on the board. Just 32 away from snatching this one, from winning this one. They're in complete control. The young boy is taken on. Now he has decided to switch around the wicket here. What he's going to do from this end? Afan Nabi, 2.3, 1 for 40. The only wicket fallen today that gone into his favor, gone into his kitty. And after that, we have seen complete carnage. Nelson for 1. And look at his figures. 2.4, 1 for 41. And these are the early days. With the passage of time, he's going to be another big lad when it comes to the cricket. These will learn. This is how they're going to learn the basics of the game. Through leaps and bounds. Life can't be full of roses again. You have to face the tough times too. That one, over extra cover again. This is gorgeous combination in the middle. They're timing the ball. They're finding the middle of the bat. An artist out on the field and is timing the ball. Look, that one makes room and sends it packing. On the bounce into the fence. It's been a glorious flow. Gorgeous, stupendous and tenacious approach from Adil Hussain. Showing that tenacity with the bat. This time Ajishwan, nothing is going bowling way. It's all going batter's way. Even that Ajishwan runs down to the third man boundary for 419 to end the power play. Just 23 away. To me, formalities remaining. There are 9 of the batters in kitty. There are 14 overs at their disposal. It can be early to say because 23 is still a figure to chase. Things can change. We have seen that in a space of overs, in a space of 4 overs. We have seen 10 wickets falling, 8 wickets falling. Likewise, we saw in the first innings. The way things changed from nowhere, and they've gone through that transitional phase all of a sudden. Top order, they were running away. They were going all guns blazing. That was downtown and distant cricket going on. They enjoyed and they entertained everyone. Enterprising cricket played by the 2 batters up front, but the middle order and the down the order, they were going through that tough time, and we saw that collapse, the rare collapse here. And once again, if we want to see that sort of a change, there is the signal.
the time for the second power play. So we're done with the mandatory here. Restrictions are gone. That is Majidora for an experienced umpire. He's got Shiraz Majidora. Recently, he was part of Gufran Memorial 16th edition, which is All India Gufran Memorial in Doda. And he posed with that Zimbabwean veteran, Mapu Pudir. Look, he's going still strong and he's punching the ball. Another punch. Nobody's going to stop. We're talking about that they need a miracle to prevail. But Umar says, no way, Munawar, come on. Oh, come on. Stop this. We are here to display the character. We're here to finish it. Next one is bigger and biggest of the lot. Knelt down on one knee. He's not going to move. He's damn sure that this one is going to be beyond the fence. Not beyond the boundary, but beyond the fence. There is a boy who's going to find the ball. It will take us some time. Take a look again. There it is. And it's gone onto the roadside. And the boy returned the ball. It's 1-2-9 for 1. I think 13 away. Is it? 13 more runs needed of 82 balls. This is just the 7th over we are in. Mohammad Umar 65. Adil Hussain 58. 18 apiece. Talking about the number of balls they use it. That's straight to the man. 1 run. They're 130 for 1. 12 away. 2 big shots. And it is going to be Panchal Warriors. Oh, there is the owner of the club. But we need to take care of our health too. 130 for 1. This is the 7th over. Let's hope for the best. That's high up in the air. Where is this one going? The man is interested, but he can't make it to the ball. On the bounce, 3 men converging, but to no avail. Just a single. 1-3-1 for 1. This is 7th over we're in. 131 for 1. 11 away. Go straight. That's 4. That were brought to you by KIS. Half tracker. Not a good ball. Not a good delivery at all. Another expensive. A 16 of just 5 balls. 135. Hits it hard. Wide up the man. Will he beat the man at long on? It does. It's 139 after 7. Just 3 away. And there it is. The MD Panchal Group and owner of Panchal Warriors Cricket Club, Mr. Ashfaq Bar, is here. And he's got the GM also alongside. And thank you for your presence. It is Shagubai there. Shububai is also there with MD Ashfaq Sab. And then talking of the Shine Iqbal Sab is also available on your screen right now. He's also visible in the frame. Back to the business. 139 for 1. And Vani Sab is also in the frame available. And back to the business. 139 for 1. 3 away. This side. Oh, that's going to be a massive victory. Landslide win. Landslide victory is waiting for PW Panchal Warriors. Here is Abdur Rashid for the first time in today's game. That's gonna be flat. That's it we have for you from game number 2 for today. Panchal Warriors. They won the game by 9 wickets. What a befitting reply. A round of applause from everyone. Even the MD is delighted. So that's it we have for you from this encounter. I'm Munawar alongside Nadeem and Latif taking you back to the studios. With this message, we'll be back shortly with a presentation. And do join us tomorrow for another doubleheader. Till then, Assalamu Alaikum. It's Adio Tata and Fi Amanillah.
हेलो अरे हेलो हेलो Hello, check. Hello, check. Welcome to the post-match presentation ceremony. We have got a couple of awards to go away, but the first one is going to be innovative one in the tournament, because Amir has been an innovative person since day one. Once I arrived here at the Sunday, I saw something special and something new on offer. The first one, it's for the entertainer, the natural entertainer. It is Farhan Wani. I request Amir to come up, please, and we will be presenting an award to a natural entertainer, Farhan, a frame to go away. Farhan is a lovely lad. May Allah bless him. We should respect these souls. These are really special for us. And he's loving Panchal. Now it's time for the official presentation. The first one is going for the Super Sixes Award, to be presented by famous commentator Shupin Sports Time owner. I request Latif Sahab and Shahid Iqbal Sahab to come up, please. Shaheen Iqbal Sahab to come up, please. They will be presenting an award to Umar Watson for his Super Sixes award on a day as he was ruling the roost with the bat. A cap sponsored by AD Caps. Even I got one. I have put on a cap of AD Caps Anantnag. Now the second one for today is the fighter of the match. Once again sponsored by AD Caps Anantnag Naibasti. It goes to Shahid Shafi. I request MD Rafi Sahab to come up, please. MD Mohammad Rafi to come up. He will be presenting a cap to Shahid Shafi. On his behalf, Chief Organizer will collect it, and later on it will be transferred to Shahid Shafi. Sir, please. Is he here? Shahid, you may come up, please. Sir, please. Shahid, looking very nice. Azan is going on, we should respect that too. So I won't speak too louder, but I will try to mute my voice in such a way so that we can respect it too. Game Changer Award for today, sponsored by GMTVS Bijbihara. It goes to Muhammad Umar, and it will be presented by MD Shazubat. Where is Muhammad Umar? Is he missing? Muhammad Umar will take away the player of the year. It is the Game Changer Award for his 74 of 21 balls. Umar, oh, look at that. Gandhi matters the most. Umar, you took the award for Super Sixes. How are you going to talk about, you took the Game Changer Award, even the Super Sixes Award. How are you going to sum up this track, and what are going to be your comments for the management and this track here at Locktipora? This is an absolute belter of a wicket. I mean, the wicket they have prepared, it's totally batting friendly, and bowlers have a little to offer, and I think I took advantage of that thing. Credit goes to the organizers for preparing such beautiful wicket. I think we should look for 50-50. 50 for the batters and 50 for the bowlers and the batters. That will be the equity. Yeah, I think more bowling friendly wickets could be the key. I mean, going forward in the tournament. I mean, that could bring in more competition with bat and ball, and that will be amazing for the tournament. Before we move on, what will be your message for the next generation or the new generation? That's our future. One message I would like to send across to the younger generation is that to stay away from drugs and do sports. Sports is the future, I think. Best of luck for the rest of the tournament, Mohammad, one of the incredible guys. Then moving on, it is the Player of the Match Award. It's to be presented by Shibu Malla to Adil Kohli. Shibu's up to come up, please. Oh, dynamic, looking beautiful. Has put on sunglasses. Sponsored by Kamal Spices, Kashmir ka apna spice and Essas. And we have a kit from Kamal Spices to go with it.
So that's it. We are for you from today's double header. We will be back tomorrow early with another doubler. Sultans are going to be in the house. Till then, assalamu alaikum and fi amanillah.